Welcome back to the Roger Geo channel, everybody. Today, we're going to be doing a slightly different style of reaction video. We're going to be taking a look at four channels that have been highly recommended to me over the course of the last couple weeks, couple months. These are the four channels we will be looking at today. So first up, we have Abhijit Chavda. Hopefully I'm saying these right. I'm really bad with names, so just a disclaimer: if I mispronounce something, I apologize. Abhijit Chavda, Dhruv Rathee, Nitish Rajput, and Abhi and Niyu. Niyu. That's gonna be Niyu, right? So yeah, these are I was gonna say three channels, four channels that have been recommended to me countless times in the comments, and I just not been able to get to any of them. So I figured, why not take a look at their most popular videos today and just make it one nice big long video. So Abhijit Chavda. The Abhijit Chavda channel is an expansive library of content that offers insight. Oh, Oh, okay. Sorry, I lost the sentence here. The Abhijit Chavda channel is an expansive library of content that offers insight into geopolitics, contemporary world affairs, and history from an Indian perspective. Abhijit Chavda is the host of the Abhijit Chavda podcast and hashtag Ask Abhijit. I really hope I'm saying his name right. Show, which are the home to discussions with subject matter experts from around the world on topics that covers geopolitics, world and Indian history, world affairs, culture, and science. Abhijit Chavda's unique research-backed worldview has made him one of the strongest voices in the Indian digital space, and he has represented India at international forums, including the G20 summit. He's been to G20. Interesting. Don't forget to subscribe, hit the notification bell, and stay up to date with the latest videos. So yeah, we're going to be taking a look at Abhijit Chavda first. Then we're going to take a look at Dhruv Rathee. I love breaking down complex issues in simple words. Learning, awareness, education is the purpose of this channel. Dhruv Rathee is a YouTube educator whose expertise lies in doing simplified and objective explainers of complex topics. Educate yourself on important things which matters in your life, and learn how you can make the world a better place for yourself, for everyone else. Be the change you want to see. Join in by clicking the subscribe button. I always should I be doing that? Should I be asking people to subscribe like that? He's got a WhatsApp channel. Does he have a WhatsApp channel? I know WhatsApp's pretty popular. He does have a WhatsApp channel. Weird. Okay. Then we have Nitish Rajput. Nitish Rajput firmly believes that there are adequate tools available online through which people can be brought together, informed, and educated collectively. Social media and the internet have the power to create any narrative, but this channel will use them to curate a healthy and informative narrative that genuinely benefits people, informing an opinion backed by facts and uncompromised information. Nitish Rajput wants to empower and facilitate people to challenge atrocities and become more vocal about the issues plaguing Indian society. And then Abhi and Niyu. Abhi and Niyu are a husband-wife content creator duo who started their journey with the purpose to make the internet positive and put positive news in front of people. Their series 100 Reasons to Love India brought out positive stories about India, India's change makers, our history, culture, and created an army of people who work to find solutions to everyday problems. Featured in Forbes 30 Under 30. Wow. Most impactful influencer of the year 2020. We are here to tell you the stories about the real India that the mainstream media ignores. We are here to share solutions. We are here to make you India positive. Hashtag following love. Hashtag Abhi and Niyu, excuse me. Hashtag Farak Pod Tahai. What is, I don't know what that is. Okay, cool. So, four pretty big channels, actually, now that I'm looking at it. This has nearly 1 million subscribers on the Abhijit Chavda channel. Dhruv Rathee has 20 million subscribers. The Nitish Rajput has 4 million subscribers. The Abhi and Niyu has nearly 6 million subscribers. So, four very large channels. 1.6 thousand videos, 600 videos, 100 videos, 800 videos. A lot of videos as well. So what we're going to be doing is looking at
the most popular video of each of these channels, and I can already see they're vastly different topics. So over on Abhijit Chavda's channel, why Genghis Khan refused to invade India is the video that we're going to be watching from him. Dhruv Rathee is um, Arvind Kejriwal jailed, dictatorship confirmed? Question mark. And then we have Modi with red glowing eyes, and then Rahul Gandhi with something over his mouth. And this guy, I don't know who this guy is, so I guess we'll find out. And then Nitish Rajput actually has the reality of Khalistan, Khalistan, Punjab Khalistan movement explained. So this is actually really interesting because we did look into some videos and topics relating to the Khalistan movement over in Canada, and how it seems that like they have Trudeau's back in a lot of different areas, which is rather interesting. Then Abhi and Niyu said their video is "This is destroying India. Pan masala industry needs to stop. Spitting problem of India." Spitting problem? Like what? Like tobacco? Like chewing tobacco? Interesting. Anyways, 4 vastly different videos. I will probably break them up in the far future, but I think for now it's all going to be encompassed into a single video. So I think we might as well just start from the beginning here. Abhijit Chavda and why Genghis Khan refused to invade India. So first up, we have Abhijit Chavda's why Genghis Khan refused to invade India. 6.3 million views, and he's going to be going over, I guess, some topics and theories and some history on Genghis Khan, which should be pretty interesting. I know a little bit about the Mongolian spread and conquering of a lot of the known world back in the day. But apparently they refused to invade India. That's interesting because I thought the Mughals were like an offshoot. Was that not a thing? Am I thinking of something else? I might be thinking of something else. Either way, let's go ahead and get into this, yeah? 1221. We have some throat singing. Do I need to put captions on? I might 799 No, I years don't. ago, Okay. in the year 1221, the great Mongol conqueror Genghis Khan stood victorious on the western bank of the river Genghis? I've always said Genghis. Is Genghis? Sorry for stopping there. Indus with 50,000 soldiers. He had just defeated Jalaluddin, the Shah of Khwarazm. Jalaluddin's army was completely destroyed in this battle, which took place near the town of Kalabagh in present-day Punjab. Across the river lay the richest country in the history of the world, India, a land of fabulous wealth, a land that accounted for over a third of the entire world's GDP. A land It's wild. Like I had no idea how just rich India was. Again, it's something that's not really taught, like at all, over here in the U.S. It's just not. It really isn't. It's unfortunate. It really is. It's just. But that's why I'm doing these reaction videos. and that would-be invaders fantasized about. A land that was groaning under foreign Islamic occupation because northern India was ruled at the time by Shamshuddin Iltutmish, the third Sultan of the Turkic Mamluk dynasty, which was founded by Qutb-al-Din Aybak in 1206. A few months before this battle, Genghis Khan had conquered Jalaluddin's vast empire of Khwarazm. Khwarazm was a Turkic empire that ruled Iran. Its rulers were Turks, not Iranians. It consisted of Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, parts of Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and much of northwestern India, which is today's Afghanistan. Genghis Khan sacked and destroyed the great cities of Samarkand, Bukhara, Nishapur, Utrar, Gorganj, and many more. He laid the Islamic heartland to waste. His army burned Islamic libraries and replaced mosques with temples. It devastated Buddhist temples. Were the Mongolians Buddhists? Iran and Afghanistan. And Genghis Khan pursued
Jalaluddin all the way from Uzbekistan into Western India. Jalaluddin had the same Hold on, can I see Turkic. that? I'd like to see this Libraries again. and replaced mosques with temples. It devastated Iran and Afghanistan. And Genghis Khan. Okay, so up here is this is yeah, so this is Inner Mongolia right here, Mongolia. Okay. Right? Or no? This is a bit further down. This is just straight up just China then, right? Yeah, here's Beijing. This is Inner Mongolia right here. Okay. Okay. Hmm. Did they never invade Tibet? They never got to the southern parts of China either? Interesting. I guess just in this time frame, empires in Asia at the beginning of the 13th century. Maybe it was different. I don't know. Huh. Pursued Jalaluddin all. Wait. What? What? Wait. What's the timing of all this? I don't know. Okay. Sorry. I should just I should let the video play, huh? The way from Uzbekistan into Western India. Jalaluddin had the same Turkic Mamluk ancestry as did the invaders who ruled northern India at the time, which is why he hoped that Iltutmish would grant him asylum in India. Jalaluddin was a foreign Turkic invader who ruled Iran, the same way that Iltutmish was a foreign Turkic invader who ruled India. The Iranian people do not look upon Jalaluddin as one of their own, the same way that the people of India do not look upon Iltutmish as one of their own, or Babur, or Akbar, or Aurangzeb. So being granted refuge in India was Jalaluddin's only hope. And he had chosen an excellent defensive position for the battle with the Mongols. It was flanked by high mountains on two sides and the great river on the third side. He had prayed fervently for deliverance, but the miracle he sought never came. His army proved to be no match for the polytheistic warriors who came from 2,000 miles away. Wow. It was swept away and slaughtered to the last man. Genghis Khan watched as Jalaluddin frantically rode his horse across the Indus in a desperate bid to escape. All he had to do was cross the river. If he crossed the river, not only would he be able to kill his enemy, but he would also have the chance to smash the Delhi Sultanate and conquer the world's richest country. And he had at his command the great Mongol army, which he had personally forged into the greatest and deadliest fighting force in the entire world. It had already done the unthinkable by conquering China and capturing Beijing. It had conquered the Karakhitai Empire in Central Asia. Okay, so this is what I thought. I for sure thought they had came down through this whole bottom part of China as well, and they did. Holy heck. Crazy. They attempted to invade Japan multiple times, but I don't think they ever actually made any significant like claim to Japan. It was something like they every time they tried to invade Japan, there was like a storm that destroyed their boats. Is that I vaguely remember something like that being the case. That's just something that I have to, I have to find a video to react to as well. Maybe read a book. And it had conquered the enormous empire of Khwarezm. This was an unstoppable, all-conquering war machine. The Delhi Sultanate was no match for it. Genghis Khan is the greatest conqueror in recorded history. He did not lose a single military campaign in his entire life. He could have simply walked into India, made short work of the Delhi Sultanate, and become the wealthiest man in the world. Instead, to make a long story short, he turned back. He spurned the heaven-sent, once-in-a-lifetime chance to conquer India. He chose to retreat all the way back to Mongolia. He did leave behind soldiers and administrators to govern Afghanistan. Those were the ancestors of today's Hazaras. His decision to not invade India has perplexed historians for centuries. It endures as a mystery even to this day. And there are a number of theories about why he made that decision. Biographies of one of his Chinese advisors claim that a talking unicorn appeared to Genghis Khan at the border of Uzbekistan and India, which is present-day Afghanistan. And this unicorn instructed him to return early from India. Some historians believe that India's
hot climate was too harsh for the Mongol army, which was accustomed to fighting in cold weather. Now, the problem with this theory is that the Mamluks, who established the Delhi Sultanate in 1206, also came from a cold climate. And future Islamic invaders of India, such as Timur and Babur, would also come from cold climates. If they could invade India successfully, then why couldn't the far superior Mongols? So it's clear that these theories do not really hold up to close scrutiny. And then there are claims that Genghis Khan refused to invade India for religious reasons. Mongolia's ancient polytheistic belief system, which is called Tengrism in English, has interesting commonalities and similarities with Hinduism. This was the religion, or rather the belief system, of Genghis Khan. And Buddhism, which essentially is just another form of Hinduism, has had a presence in Mongolia for nearly 2,000 years. Genghis Khan's grandson, Kublai Khan, would go on to adopt Buddhism as the Mongol Empire's de facto state religion. I see. I did not know. I knew Buddhism was really, really widespread. I did not know that the Mongols were Buddhist as well. Mongols today are Buddhists. Because of this, it is speculated that Genghis Khan may not have wanted to spill blood in the land that gave birth to Hinduism and Buddhism. That's Now, actually this is possible, but that's actually a very probable idea, I guess. I'm thinking about it. I can definitely see that being a major factor. But again, I don't know anything. it's also true that by conquering India, Genghis Khan would have freed the land of the genocidal barbarians who had not only destroyed Buddhism and Hinduism in Afghanistan, but were also doing their best to eradicate it from the rest of India. So how do we deduce the reasons for his decision? The whole destruction of religion and cultures, it's a shame. It's a travesty. It really is. A lot of different cultures and peoples have done it to a lot of different peoples all throughout history, and it's just so much was lost. To do that, we need to understand Genghis Khan as a person and as a leader. Genghis Khan is an enigmatic personality. Despite his immense fame and reputation, we don't really know a lot about him. He did not seek to explain his actions and decisions. He did not leave behind a memoir or an account of his career the way Julius Caesar or Marcus Aurelius or Napoleon Bonaparte did. What we know about him comes from two sources. The first is the secret history of the Mongols, which was written after his death. And the second is the accounts of the people he conquered, the accounts of his enemies. These sources tell us about the man's deeds, but not much about his motivations. We know what he did, but we don't know why he did those things. To understand why he decided against invading India, we need to gain an insight into his motivations. And to do that, we must examine his life and his career, because therein lie the clues to what motivated him. So let's do that. Genghis Khan was born in Mongolia sometime around the year 1158. His birth name was Temujin. His father, Yesugei, the leader of the Borjigin tribe, was a wealthy and powerful man. The Mongols were and still are a nomadic people, and the Mongolia that Temujin was born in was a disunited, fragmented nation whose tribes were perpetually in conflict. They were always fighting each other. And this conflict was engineered by the empire to the south of Mongolia, China. Chinese rulers collected tribute from various Mongol tribes and encouraged rivalries and conflicts among them. Whenever the Mongols tried to unite, the Chinese launched punitive expeditions against them, either killing them in large numbers or enslaving them in large numbers. One of Temujin's relatives, the Khan Ambagai, who attempted to create a confederation of several tribes, was captured, brought to China, and executed by crucifixion and dismemberment a few years before Temujin was born. The Chinese kept the Mongols fighting each other for centuries in this manner. When Temujin was about 12 or 13 years old, his father was murdered by Turkic tribesmen, and his family was abandoned by his tribe and left to die in the harsh Mongolian winter.
Now, Mongolia is a vast, frigid, mostly barren land. Very little grows there, and the temperature routinely goes below minus 30 degrees Celsius in winter. It's almost impossible for a family to survive alone in this environment without the support system and division of labor that a tribal group provides. So, being abandoned in this manner was essentially a death sentence. The family did manage to survive, just barely. It was a harsh and brutal childhood. Temujin realized that although his father was a wealthy and powerful man, his wealth proved to be of no use after he died. It was just casually stolen away. He realized that power can make you wealthy, but wealth cannot buy you power. When you are powerful, wealth can buy you more power. But when you have no power, your wealth cannot save you from those who have it. Power trumps wealth every time. Timeless wisdom. This is something he never forgot. For the rest of his life, he sought only one thing: power. He disdained wealth, using it as nothing more than a tool. To make a long story short, he spent the best part of the next 3 decades fighting and raiding and gaining power. He began at the very bottom with absolutely nothing to his name. Over the years, he learned the secrets of power. He acquired a profound understanding of the levers of power and how to wield them. By the year 1206, when Temujin was in his late 40s, he had conquered every single Mongol tribe and created a... So wait, where does he get the name of Genghis Khan? I mean, I guess he's gonna say it here soon, but I didn't know his name was Temujin. Temujin. It's a name I'm not familiar with. There's so much in this world that I don't know. There's so much to learn. unified Mongol nation. They gave him the title of Genghis Khan, which means universal or oceanic ruler. Now, It's a title? Oh. I thought it was a name this whole time. It's a title. Huh. when you have a newly created nation whose tribes have been fighting each other for centuries, it's essential to integrate them and keep them occupied so that old divisions don't crop up. It's essential to give them an overarching common purpose. And that's what Genghis Khan did. He led them on an invasion of China. This was a retaliatory invasion. Its purpose was to avenge the murder of Ambagai and to punish the Chinese for centuries of interference and atrocities. China was ruled at the time by two dynasties: the Western Xia dynasty in northern China and the Jin dynasty to the east. Genghis Khan conquered the Western Xia by 1210, whose emperor agreed to submit to Mongol rule and become a Mongol vassal. Genghis Khan then invaded the Jin dynasty's territories, and he captured and sacked Beijing in 1215. In the year 1218, the Karakhitai Empire captured a Mongolian city and killed its king. Now, this king happened to be Genghis Khan's grandson-in-law, so that was a very bad move. In retaliation, the Mongols invaded and conquered Karakhitai, which gave them a direct border with the Khwarezm Empire. That same year, Genghis Khan sent a 500-man strong trade delegation to Khwarezm to establish official trade relations. The Shah of Khwarezm, Alauddin Muhammad II, who was Jalaluddin's father, had the trade delegation massacred in the city of Utrar, and the goods were auctioned off in Bukhara. Genghis Khan then sent 3 ambassadors to meet the Shah and demand that the governor of Utrar be handed over for punishment. The Shah had one ambassador beheaded and the other 2 humiliated before sending them back. What an idiot. So this left Genghis Khan with no alternative but... I'm sorry, just the line, what an idiot. It was delivered so dryly that it worked so well for like just that comedic little hit. War. He responded by invading and devastating Khwarezm. The Shah, Muhammad II, escaped to a small island on the Caspian Sea where he died. His son Jalaluddin became the new Shah,
and was pursued by Genghis Khan all the way to India, where what was left of the Khwarazm army was destroyed in the Battle of the Indus in the year 1221. Now, when Genghis Khan went on his invasion of Khwarazm, the emperor of the Western Shia, who was his vassal, refused to contribute troops for the invasion. This was a betrayal. In retaliation for this, after conquering Khwarazm, Genghis Khan brought his army back to China and re-invaded the Western Shia Empire. This territory was reconquered by the year 1227. Genghis Khan then prepared to invade the Jin Empire because they too had rebelled against him. However, before he could do that, he died in the year 1227. The cause of his death remains a mystery. His third son, Ogodei, who succeeded him as the great Khan of the Mongol Empire, completed the task of conquering the Jin Empire. Genghis Khan's grandson, Kublai Khan, founded the Yuan dynasty in China and was this dynasty's first emperor. So let's recap Genghis Khan's career as a conqueror. He invaded the Western Shia I have heard of Kublai Khan before. Empire and the Jin Empire in retaliation for the murder of his relative Ambagai and for centuries of Chinese interference and atrocities. He invaded the Karakhitai Empire in retaliation for capturing a Mongolian city and for killing Genghis Khan's grandson-in-law. He invaded Khwarazm in retaliation for extremely grave provocations. And he re-invaded the Western Shia in retaliation for their betrayal. So do you see the pattern? Genghis Khan's invasions were always retaliatory in nature. He went to war only when there were just causes for war. He did send his sons to conquests on far-off lands so that they would each have more than enough territory to call their own after he died. His sons were highly ambitious, and he did not want a civil war among them after he died. That would have been disastrous for his newly unified nation. But he himself went to war only in retaliation, only when his red lines were crossed. Now let's bring our attention back to India. The Mamluk invader Sultan Iltutmish was extremely careful not to provoke Genghis Khan. When Genghis Khan entered Punjab in pursuit of Jalaluddin, Iltutmish wisely stayed away, even though Punjab was part of his territory. And even more wisely, Iltutmish refused to give Jalaluddin asylum in India. And by doing this, he ensured that Genghis Khan had no reason to feel aggrieved with him. But why didn't Genghis Khan pursue and kill Jalaluddin? The answer to that is simple. With his empire lost and his army destroyed, Jalaluddin had lost everything. He had become a non-entity. He remained a Shah only in name. He would never be a real threat again. So it was pointless to pursue him after his army was destroyed, especially when there was a Chinese betrayal to avenge. But what about India's fabulous wealth? Didn't that tempt Genghis Khan? So like I said earlier, Genghis Khan regarded wealth as nothing more than a means to an end. His armies did plunder enormous amounts of treasure during his conquests, but he personally kept none of it. He insisted that it be divided equally amongst his soldiers and commanders. And he did earn vast amounts of wealth in the form of tribute from his tributary states, but he used that only for administration and governance. The Mongol Empire had more than enough wealth. Interesting. Genghis Khan understood instinctively that too much wealth would make his people lose the hunger and the iron discipline that set them apart from all others. That was the last thing he wanted. It's also possible that he may not have wanted to inflict pointless collateral damage on the Indian people who were already suffering under brutal foreign rule. He knew that an invasion would cause a massive number of deaths among India's civilian population, whether he liked it or not. It's possible that he did not want to hurt the people of India, even though he was not in a position to help them. It's possible that he felt a cultural affinity with India, the kind of affinity he could not feel with Iran or Afghanistan, which had already been almost completely Islamized by this time. We don't have primary... So just one question is, like, he's talking about being like Genghis Khan having this like potential connection on a more spiritual level, right? Almost to a sense of, to like India in this instance here.
Is there any records of him ever visiting India or being to any of the cities or nations there, or is he just getting this information via like a third party, someone else that's just relating the information of the land? That's something I want to know. Did he ever even like? I don't even know like if that's something that he even did, where he would go to other ruling kingdoms or empires, on a more friendly basis. I don't know. Hmm. Evidence or testimony that proves this conclusively, but I do not rule this out. If you look at Mongolia's society and culture, you will see Indian influences everywhere, even today. To summarize, there are four reasons why Genghis Khan refused to invade India. Firstly, his national interest dictated that he should return to China at the earliest to deal with the Chinese betrayal. The longer he waited, the bolder would the Chinese become, and the greater would be the scale and the magnitude of their rebellion. He had already spent too much time conquering Khwarezm. Time was of the essence. Second, he did not face any provocation from the Mamluk dynasty, which was ruling northern India. Third, he did not want to pursue a man who had already lost everything and who was no longer a threat. And lastly, he was not motivated by a desire for getting wealthy. He was not motivated by wealth. He was motivated by a desire for revenge and justice. He went to war only in retaliation. He invaded countries only when his own country was wronged. Do you know what that is called? It's called having principles. Genghis Khan is one of the most misunderstood and misportrayed historical figures of all time. And this misportrayal is deliberate. Western historians despise the fact that a non-European was far greater than Alexander, Caesar, or Napoleon. Islamic historians loathe the fact that a polytheist. I don't know if that's the truth, but because we've only ever heard we've only ever heard how great of a conqueror he was, right? How vast his empire was. I mean, I guess we didn't learn, like some of the things you've mentioned in this video, but I don't know. I don't know. Like I've learned more about Genghis Khan than I have about anything from India. I mean, I remember even there being a small subject in high school, in my in my high school where we talked about Genghis Khan. So I don't know about the Western historians. Maybe in the past, possibly, but I don't know. Not so much anymore. Non-Muslim. Islamic historians loathe the fact that a polytheist non-Muslim kafir brought the Islamic world to its knees and reduced it to utter helplessness. And the less we say about Indian historians, the better. Their attitude is, why should we even talk about somebody who did not do us any harm? Why should we glorify someone who did not hurt India? Let's just stick to glorifying the Mughals. So historians have almost universally portrayed Genghis Khan as a bloodthirsty savage and a greedy, barbaric, genocidal monster. It's curious that Jalaluddin, on the other hand, is depicted as a towering, heroic figure, even though he was a complete failure. Jalaluddin achieved nothing of significance. He presided over the destruction of his empire. He presided over the dissolution of his dynasty, and he died in obscurity. Napoleon Bonaparte was completely right. History is a set of lies agreed upon. The truth is that Genghis Khan was no more monstrous than Alexander, Caesar, or Timur, or Columbus, or Aurangzeb, or Churchill. Genghis Khan was certainly less savage than the Islamic and European colonizers of various parts of the world, and he was definitely less monstrous than Stalin and Mao. The reason why Genghis Khan is so misunderstood is because historians have adopted a simplistic, reductionist approach with him, while treating European and Islamic rulers with a great deal of depth and nuance and sophistication and deference. And this is precisely the same approach which they take with India's history. Genghis Khan was simply a product of his time. He found a way to survive and succeed in an exceedingly harsh and brutal world. And he did not merely succeed, he excelled. He became the greatest conqueror the world has ever known. Maybe it's time we understood Genghis Khan better. There's a lot we can learn from his life and career. Today you learned
who Genghis Khan was. You learned about his life and career. You learned about what motivated him and what did not motivate him. You learned why he invaded the various countries he conquered. You learned why he refused to invade India. You learned a little about leadership and the national interest. And you gained a small glimpse into how Genghis Khan's actions shaped the world we know today. So that's a brief introduction to an important and fascinating chapter of history that our teachers never taught us about. I've given you a high level overview. Learning about these important passages of history empowers us because it helps us understand the world better. That's the reason why we must learn about them. That's the reason why we must study history. Do you agree? Let me know what you think in the comments below. Please like and subscribe. I'll talk to you soon. Interesting. You know what? I actually enjoyed the video. I felt like there was a lot of questions and a lot of topics that were brought up, and it talked about something that I guess I really don't know too much about, but I feel like there's still a lot more to learn, right? um, I definitely have to try to figure out a way to find some books and read a little bit more about the history, because it's I guess there's a lot more to the Genghis Khan that I didn't know. What was his name? Timojin. Who would have thought? Who would have thunk, right? His name was Timojin. It shows how ignorant I am, I guess, going through my entire life, not even knowing, the basics of the history and stuff, and like important figures. But yeah, that was Abhijit Chavda's most popular video. I am going to go ahead and read the comments though. So we'll take a look at some of the comments. We'll sort by some of the top comments, and we'll sort by some of the newer comments. I like to sort by newer comments, to get a little bit more of an unfiltered look into seeing what people think about the video. But first things first, we're looking at top comments. My grandmother here in Mongolia refers India as the land of the gods and has deep respect. Wow. As a Mongolian, I must admit that I am amazed by your outstanding and coherent explanation. I am proud that our ancestors were men of principle and respected different cultures. Cheers. My history teacher, Egypt, explained the same reasons for not invading India, emphasizing the ruling Mamluk did not provoke nor pose any threat to Mongols, and that the great Khan had no greed for wealth, but was driven by a deep desire for righteousness and revenge. Genghis Khan's grandson had a good relationship with the Tamils Chola dynasty. He built Lord Shiva's temple in China and advised of Chola for recovered. He built Lord Shiva's temple in China with advice of Chola for the recovery from his illness. Okay. You had me at the less we say about our Indian historians, the better. Their attitude is like, why should we talk about someone who didn't harm India? Why should we glorify someone who didn't hurt India? You summed up all the Indian eminent historians in one sentence? I don't know. I still don't understand what they mean by that. Maybe someone in the comments can help explain. No shitty, no shitty music, no fancy editing effects, just pure content by someone who's an actual historian. One of the best videos ever. Period. This I will say, I actually I like the fact there was no. I mean, we had like the Mongolian music, right, with a little bit of the throat music, and then just like whatever their instrument is, which is fine. But yeah, there's no like weird music, no weird edits. Some people like edit 1, 2, 3, 4, cuts, and in the tiny little time span. I mean, you're watching the channel, right? If you've gotten this far, you probably know that I like a very basic, clean, just a template for a video. This is the first intelligent commentary about Genghis Khan I've seen or heard, and I'm not young. Okay. As a Mongolian, it is nice to know there are people who actually know the real facts. As a Mongolian, I really respect your knowledge of our history. Thank you. I'm Irish. Great to hear a great story, true history. Keep up your good work. I grew up learning history with a Western narrative and perspective. Even a majority of our Indian history taught was on Mughals. Is quite a revelation, refreshing to hear from an Indian historian. Thank you.
I'd never be hostile to India. All those fabulous meals and great remedies. Okay, let's take a look at some of the newer comments. So yeah, I mean it's good to see like some of the some Mongolians on here, you know, actually praising him for his video. That's pretty cool. But we'll take a look at some of the newer comments to get a more filtered look or unfiltered look. Amazing insight and great narration. Thank you for making everything clear about my great grandfather Genghis Khan. Yeah, isn't it something like 2% of the population is related to Genghis Khan? Genghis Khan is Bardra for the Hindus. I don't know what that means. Um, oh, well, we have this. We can translate this. Goosebumps. Knowing about a warrior with such an amazing fighting ethic, history would have been different if Genghis Khan attacked Delhi. Goosebumps. If Genghis Khan invades and conquers Delhi Sultanate, we would not experience the barbaric, uncivilized brutality. Huh. It would be interesting. It'd be an interesting little thought experiment to think a little bit on like an alternate history of you know like what if right, or like a what if scenario. I don't know. Hmm. I don't know. I need to learn how to read Telugu. I need to learn how to read a lot of Indian languages. Jai, I don't know what that means. Genghis Khan book. Genghis Khan book I read said he didn't want to because it was too hot. Did he gave an interview about this? Yeah. What? Okay. Very interesting. Great explanation. So grateful. Let's scroll down a little bit. Actually, there was something with like 6 replies. How is Buddhism another form of Hinduism? It's just Dharma. You people group every school of thought from India as Hinduism and not to give the credit you make what you call Buddhism, forgetting the fact that Buddha was himself a Hindu. It's not. He's a Hindu fundamentalist. They all think that every religion is Hinduism. Buddhism originated from Hinduism itself, many more religions such as Sikhism, Jainism as well. It was influenced by Hinduism, not originated. It's an agnostic faith, while Hinduism contains many sects, but many Hindus don't even know Hinduism, and Sikhism is influenced by both India and Persian culture. Hinduism already had an agnostic sect. People who followed the sect are called Nastic, and Sikhism has nothing to do with Persian culture. It's a dharmic religion. Sikhism it kicked out Persian Afghans out of India's subcontinent, while also ruling Afghan parts today known as KPK in Pakistan. That's the only cultural mixture Punjab has faced. Please learn the full story about before typing anything. Half knowledge is more dangerous. Then why? There's a lot to read. I'm gonna move on. I'm moving on from that one. You are the only unbiased Indian historian I have come across on YouTube. Is that true, comments? Is that true, viewers? Commenters, viewers? Is this true? Is it the only unbiased Indian historian? I've heard a lot of things. I've heard a lot of things about him and Dhruv Rathee. How they both have like extreme biased in them. Well, he should of no, he should. God. Well, he should off. Now you have RSS Modi Bloodlord. What? What does that mean? Modi Bloodlord? I don't know. Conquering is easy, ruling is hard. Genghis Khan. Lore of why Genghis Khan refused to invade India. Momentum 100. When a conqueror conquers from east to west, they're savage, bloodthirsty, and barbaric. When a conqueror conquers from west to east, they're great. Another history YouTuber. This isn't really true. Nobody really considered China barbaric from conquering east to west. It's more so what most people considered civilization was located at the western and eastern edges of Eurasia, while the center was dominated mainly by nomadic tribes. Okay. Genghis Khan and Vladimir seems extremely similar. Not gonna lie, Vladimir Putin and Genghis Khan. Well, I don't know about that one. I don't know about that one.
Cavalry no work with jungle and mountains? Question mark. That is something to bring up. That is definitely something to bring up. Although that being said, a lot of the upper northern parts of India were rather flat, right? After you get through to like Punjab and Haryana and Uttar Pradesh, rather flat. And then it's when you start going south is when things start to get a little rough, right? Because you get the Deccan Plateau and the Ghats, and then of course north. Yeah. Anyways, why the random Mao slander? Crying because Mao was a terrible person. Mao Zedong was an absolutely barbaric ruler. I hate to break it to you, Bindo, but he was really bad. He caused a death to a lot of his people, and he destroyed a lot of culture. A lot of ancient Chinese culture in inner India is completely destroyed because of him, because he had the thing of like destroying the olds, right? So he had people go and destroy the old religious centers, the old cultural heritage stuff. So the only real way to get, like the true Chinese, history and culture is in places like Taiwan, or even like Japan has a lot of museums and things with some ancient Chinese culture. But that's a whole other subject. Anyways, two more comments and then we'll move on to the next one. Sir, can you please recommend which book is best for gaining accurate knowledge of world history? You won't find that in one book. It's all just perspective. All right, and this one, thumbs up. Okay, well, no, excellent video. No, that's too small. This one, it is the belief of Mongols that those have that. God, I cannot read today. It is the belief of Mongols that those has big eyes has a lot of bad spirits. So, the Khan afraid of India because of their big eyes. Really, Indians don't have big eyes. Europeans, Americans, and Indians have the same eye size. Only the East Asians have smaller ones. We all have normal ones. Okay. Okay. All right. All right. Yeah. Okay. So let's go back up. So this was Abhijit Chavda's most popular video, sitting at 6.3 million views. Wow. Wow. And now we have Dhruv Rathee, and we're going to take a look at his most popular video, which is Arvind Kejriwal. I'm so bad with names. Arvind Kejriwal jailed, dictatorship confirmed. Dhruv Rathee. I like how he puts his name at the end. Interesting. I see a little bit of a trend here. Dictator highlighting Modi. Dictator highlighting Modi. Modi real story. And I think if we search by his latest videos, yeah, the mind of a dictator with Modi. I don't think he likes Modi very, very much. Um, but you know what? I am going to take a look at the most popular videos of all of these channels, so I can't say no to it, right? We will take a look at this one with 33 million views. I will say before I watch this, I did notice that, yeah, he's actually out of Germany. I thought he was out of India. I mean, he is Indian, right? But I guess he's living in Germany right now, maybe? I don't know. I don't really know. But it's interesting that his is out of Germany. But if you go and we take a look at the other ones, India, India. Okay. I mean, not to say that you can't, be out of India to talk about India, but it's interesting. It's interesting. I mean, I'm from the U.S. and I'm talking about India, so. But he is actually Indian, and he's just living in Germany right now. I don't know. I don't know his story. But yeah,
we are going to be watching this video. नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? एक महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को शॉकिंग लगा था। लेकिन किसी भी Indeed, dark reality. सच्चे देशभक्त के लिए जो सही मायनों में देश की परवाह करता है, उसके लिए सवाल बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को डाउट हुआ था कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के Arvind Kejriwal. I need to know how to say his name. I've been butchering it like so bad. देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को Kejriwal. Okay. बिना मनी ट्रेल और बिना कन्विक्शन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को प्रधानमंत्री मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे। सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से एकदम पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ का फाइन लगा दिया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि कैसे ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स डिक्लेयर होते ही उन पर ईडी और आईटी के नोटिस आ जा रहे हैं। और कांग्रेस का तो ये तक कहना है कि उन्हें अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट्स छापने तक नहीं दिया जा रहा। इसको छपवाने के लिए हमने नीचे अपना नाम भी दिया, सारा ब्यौरा दिया कि चंदा दो धंधा लो चल रहा था। इस विज्ञापन को छापने से मुख्य जो अखबार थे उन्होंने मना कर दिया। ये क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शंस लड़ी जाएंगी? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। और कुछ लोग जिन्हें अभी भी लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी भी, या फिर जिन्हें लगता है कि तानाशाही अच्छी चीज होगी देश के लिए, इनके सवालों को भी आंसर करते हैं। Wow. I just want to say I didn't realize, like, okay, he is definitely he's not apolitical or unbiased. Okay. That's fine. I don't have any skin in the game, right? Like, I'm not here to choose a side or, try to influence anybody. I've seen some comments saying, "Oh, I'm a BGP supporter," or "I'm a Congress supporter." I live in the US. I'm just reacting to some videos because I'm interested in learning more about India. So, yeah. Anyways, we're going to continue this video. What is this guy's name? Rahul Gandhi, right? वीडियो शुरू करने से पहले आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, इसलिए जो होली डिस्काउंट है ध्रुव राठी एकेडमी पर, उसे 4 दिन और एक्सटेंड किया गया। अब 4 अप्रैल तक इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं होली 50 फ्लैट 50% ऑफ पाने के लिए, मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स और मेरे चैट जीपीटी कोर्स दोनों पर। इन क्यूआर कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं जिस भी कोर्स में। This is the second. I thought I turned these reactions off. I have these reactions turned off, and yet they still go on. That was not me. That was my dumb Mac. My dumb Mac doing dumb reactions. Anyways, I've lost my train of thought now. As I was saying, this is like the second or third Indian channel that I've seen selling courses for Chat GPT training. I'm just gonna be up front and honest with you guys. You don't need a course to do Chat GPT. You can just go on there and experiment and kind of do it yourself. I don't know why you would need a course for it, but if you feel like you want to take a course, I guess do it. But in all honesty, as far as like Chat GPT goes, I don't think you need a course. But yeah, we'll go ahead and continue this video. I just thought it was interesting that it's like the second or third Indian YouTube channel that I've seen that is offering a Chat GPT course. आप इंटरेस्टेड है, नहीं तो लिंक इनका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। I think the other one is Think School.
करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया था, आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था, और ये सब लोग आज भी जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने को हो रहा है और सत्येंद्र जैन को तो 2 साल होने को हो रहे हैं जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का भी गुनाह I will hope that some people down in the comments will help explain a little bit more about these individuals, because I unfortunately don't know about them. I know of some of the current political issues and strifes going on, thanks to the kind people over on my Discord channel explaining to me and keeping me up to date on some things. But when it comes to certain people, I'm unfamiliar with it. कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती हैं कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं, 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी या इनके मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर ने यही चीज बताने की कोशिश करी थी दिल्ली हाई कोर्ट को कि यहाँ पर कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट इस पॉलिसी से देश की जनता को फायदा हुआ क्योंकि सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट इन्हें बेल क्यों नहीं दे रहा? इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2018 में जो इस कानून में अमेंडमेंट करी गई थी मोदी सरकार के द्वारा, इस अमेंडमेंट में सरकार ने बेल की कंडीशंस बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी कानूनों में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है। लेकिन PMLA में अब क्या हो गया है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, आपको तब तक बेल नहीं मिलेगी। Has bail under PMLA become near impossible? The story so far. Recently, the Supreme Court, in the case of this person versus the Union of India, gave the judicial stamp of approval to the twin conditions of bail under the Prevention of Money Laundering Act. The condition was contested as being arbitrary and draconian in as much as the reverse the presumption of innocence at the stage of bail. The judgment is of immense importance given that delay of denial in grant of bail was recently identified by the Supreme Court in the case of this person as being a leading factor in the perpetuation. I want to read this. Okay, so what he's saying is there's the PMLA, Prevention of Money Laundering Act. There was an act from 2018 that that turned the tides for I guess accusing people of money laundering. जब तक आप अपने आप को इनोसेंट ना साबित करो। इसी 2018 की अमेंडमेंट में ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद भी एक्सप्लेन किया था अपनी अरेस्ट से पहले। ईडी के केसेस में जमानत क्यों नहीं मिल रही लोगों को? अब ये पूरा कानून इन्होंने ईडी में पलट दिया। अब इसमें हो गया यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस कानून में इन्होंने ये लिखा है कि आपके ऊपर आरोप लगेगा, आपके ऊपर FIR होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। लेकिन बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। I will say that there are some incidents where bail is denied here in the U.S. I mean, typically it is here in the U.S. It's, you know, innocent until proven guilty. But there are some cases where even here where bail is denied, but I think that's more of like on an individual per person basis rather than like on an incident basis. का भी कनेक्शन। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों की स्टेटमेंट्स के बल पर अरेस्ट किया ईडी ने। उनमें से एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, जो कि ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 की बात है कि ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इस एलिजिड लिकर स्कैम के केस में। उन्होंने जो स्टेटमेंट केजरीवाल के फेवर में थी, लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर 2022 को ईडी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। इनके अरेस्ट होने के सिर्फ 5 दिन बाद। When I say that, I've heard like just a few like passing sentences and comments. इनकी कंपनी ऑरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। ये चीज हम जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को देखकर।
आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये करीब 6 महीने तक जेल में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि इन्होंने 9 अलग अलग स्टेटमेंट्स दी इस 6 महीने के पीरियड में, जो कि सारी स्टेटमेंट्स केजरीवाल के फेवर में थी। उसकी अरेस्ट हुई, उसके बाद उसके 9 स्टेटमेंट्स होते हैं। मैं 9 स्टेटमेंट्स वो मेरे खिलाफ नहीं बोलता। उसके बाद 6 महीने उसको अरेस्ट करने के बाद 25 अप्रैल को वो टूट जाता है। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट जो देते हैं वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले ही महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवर बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के करीब 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। अब देख रहे हो दोस्तों किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा हमें बताता है कि टोटल में इनकी कंपनी ने 52 करोड़ रुपीस की बॉन्ड्स खरीदी थी, जिनमें से 2/3 करीब 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास। यही कारण कि आतिशी ने कहा कि इस एलिजिड लिकर स्कैम का जो मनी ट्रेल है वो आम आदमी पार्टी के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास जाता है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। जो बाकी 3 लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, उनकी कहानियों में भी ऐसी ही क्रोनोलॉजीज आपको देखने को मिलेंगी। शायद यही कारण कि अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन्स मिस किए जा रहे थे ईडी के, और उन्होंने ईडी के इन सारे समन्स को इलीगल ठहराया। उनके अनुसार ईडी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इन्हें किसी भी बहाने से अरेस्ट करना था, जिससे कि पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकारों को गिराया जा सके। एक 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस केस की, जब अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में डिफेंड कर रहे थे। अगर आप वो सुनना चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस पॉलिटिशियन राहुल गांधी ने कहा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यहां अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है और ये कोशिश भी कई महीनों से जारी है। पिछले साल अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत ही अजीबोगरीब डिफेमेशन केस किया गया, जिसके जरिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करी गई थी। इस केस की मैंने डिटेल में इस वीडियो में बात करी थी, जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे होने से रोक दिया, नहीं तो आज के दिन देश की 2 सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज के टॉप लीडर्स जेल में होते हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम पर। इसके अलावा एक 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है। 1993-1994 का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि वहां पर कुछ हुआ था उस समय पर, अब हम उसका पीनल चार्जेस मांगते हैं। और 29 मार्च को I'm trying to read these. He does go by them pretty quickly. डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को। और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी आईटी डिपार्टमेंट ने। किस कारण से? क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड यूज किया था। हर एक ऑपोजिशन पार्टी को इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। इस ट्वीट को देखिए। टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट साकेत गोखले ने लिखा कि पिछले 72 घंटे में इन्हें 11 अलग अलग इनकम टैक्स के नोटिस आ गए। कुछ तो 7-7 साल पहले के नोटिस हैं। क्या ऐसे होंगी देश में फ्री और फेयर इलेक्शंस? हालातों को देखकर इस फिल्म की याद आती है। Why This movie was so bad. This movie's called The Dictator. It's by Sacha Baron Cohen. I think that's his name. He did the Borat movies. There's 2 of them. And man, the Dictator movie, oh my god, it was garbage. It was so bad. I'm sorry. द डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म जो कि एक सैटारिकल कहानी सुनाती है एक फिक्शनल डिक्टेटर की। रेस जीतने के लिए डिक्टेटर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका ने स्टेटमेंट दी और अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट। I hope that in India's everyone's rights are protected. People can vote in free and fair atmosphere. A spokesperson for UN Secretary General Antonio Guterres has said the world body hopes that in India
And in any country that is having elections, political and civil rights are protected, and everyone is able to vote in a free and fair atmosphere. I mean, I don't think this is necessarily. I don't think this statement. I mean, at least from this right here, I don't think this statement is directly, pointed at India, because there are many countries that are having elections this year. I mean, the U.S. is having an election this year, right? Let me go back. I want he skipped past रेस जीतने one के of लिए these really डिक्टेटर quick. किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी Hold on. Okay, so Germany on Friday became the first major global power to remind the Delhi chief minister Arvind Kejriwal, who was arrested by the enforcement directorate on Thursday, has the right to a fair, impartial trial. की तरफ से स्टेटमेंट आई, फिर अमेरिका We continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi CM, who we are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of the bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming election, the U.S. State Department spokesperson Matthew Miller said. Even still, like, what are they going to do? What is the US going to do? What is the United Nations going to do? Okay. ने स्टेटमेंट दिया, अब तो यूनाइटेड नेशंस भी कहने लग रहा है। वो उम्मीद करते हैं कि इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ बीजेपी के पॉलिटिशियंस तो अब ओपनली I mean, that's not true. Saying that India's reputation has taken a nosedive, that is 100% not true. I think India is more known and loved right now than many times before in the past. Anyways. हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का Karnataka BJP MP said that achieving I can't read that, majority in both houses of parliament and state government I can't read that. Okay, well, can change constitution if BJP gets 400 seats. So he's saying they can change the constitution if BJP gets over 400 seats. कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। इस खबर को देखो, 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट घोषित किया। ये हुआ सुबह के 9 बजे और सिर्फ 1 घंटे बाद 10 बजे इन्हें ईडी का नोटिस आ गया। अमोल कीर्तिकर जी जैसे उनका नाम घोषित हुआ, उनको ईडी का समन्स आया। ये दबाव तंत्र है, ये डराने की कोशिश है। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा। 8 महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की अलायंस ज्वाइन कर ली थी और इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस खबर को देखो। जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ। CBI closed a corruption case against NCPs months after he joined NDA. Okay. उसे अब बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं था। ऐसे ही बहुत से और केसेस हैं, जैसे कि नवीन जिंदल का केस देखो। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन पर कोलगेट स्कैम का आरोप लगा था, लेकिन Colgate scam? What is this Colgate scam? BJP on Sunday decided to field Naveen Jindal, who he heads steel and power giant JSPL from Kurukshetra. I cannot. Again, I'm terrible with names. Hours after switched over to the Saffron Party, Jindal and accused. Hours after he switched over to the Saffron Party, Jindal and accused in the coal scam, which was a key election issue for BJP in 2014, was twice elected in Lok Sabha from. This is such a hard thing to read. Why is this so hard to read? Is it my dyslexia acting up, or is this like this just feels jumbled? In 2014, he had finished third. This does not feel concise at all. Maybe it's just my dyslexia. Anyways. इन 25 मार्च को बीजेपी ज्वाइन करते हैं और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग इतने बेशर्म हैं कि वो फिर भी कहते हैं, अरे अगर ये नहीं तो और कौन। हालत देख रहे हो देश में क्या हो गई है। हालत ये हो गई है कि कोई भी और ऑप्शन यहाँ पर बेहतर है। देश में इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन वहां अपनी अलग कहानी चल रही है।
9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे उनको। लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि एक्चुअली में अरुण गोयल की जो हेल्थ थी वो परफेक्ट थी। I think these things are very poorly translated, because if you look at this, he is in the pink of health. He is in the pink of health. Is this supposed to be like peak of health? He's in the pink of health. Maybe that's just a phrase that I'm unfamiliar with. The pink of health. राजीव कुमार का कहना था कि उन्होंने ये इस्तीफा दिया क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स थे उनको। लेकिन द हिंदू अखबार के अनुसार उनके पास के जो लोग थे उनका कहना है कि एक्चुअली में अरुण गोयल की जो हेल्थ थी वो परफेक्ट थी। कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के बीच में असहमतियां थी। अब इसके अलावा एक और इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट खाली पड़ी थी। देश में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनके रेजिग्नेशन के बाद 2 पोस्ट खाली हो गई। 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए और कौन अपॉइंट करेगा? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मार्च 2023 में 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी सरकार करीब 3.5 महीने पहले एक नया कानून लाई यहां पर और कहा कि नहीं, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, हमारी ही सरकार का यूनियन मिनिस्टर होगा और प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन सही। इसके अनुसार 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई उसमें थे प्रधानमंत्री मोदी, दूसरे थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे थे एक ऑपोजिशन पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। लेकिन इस अपॉइंटमेंट के वक्त भी प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक रात पहले उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई और मीटिंग से एकदम पहले उन्हें 6 नामों की शॉर्ट लिस्ट दी गई और उन्हें समय ही नहीं दिया गया जज करने के लिए कि किसे अपॉइंट करना चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्या है, लोगों का उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी इंटीग्रिटी कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया कि यह गलत है कि इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई। Full details of the picks not given. Supreme Court concerns of the EC smokescreen. The Supreme Court expressed concern at the procedure adopted by the center to appoint 2 new election commissions, while refusing to quash the appointments on Thursday. The full judgment uploaded only now shows the apex court was concerned about the full details and particulars of the candidates not being circulated among all members of the selection committee, then picked. Well, I wish I could read the whole article. Does he list these articles anywhere? No. Okay, well, that's fine. लेकिन उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा कि बहुत केओस हो जाएगा अगर हम 2 अपॉइंटमेंट्स को रोक दे तो कौन थे ये 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स जिन्हें अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो कि एक्चुअली में 2016 से 21 के बीच में होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। दूसरे है सुखबीर संधू जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और 2014 से लेकर 2023 के बीच में इन्होंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काम किया, चेयरपर्सन ऑफ NHAI रहे और चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तराखंड के। क्या इन इलेक्शन कमिश्नर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये फेयर तरीके से लोकसभा की इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे? ये टाइम ही बताएगा। अब हमारे देश में अगर कोई इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी जुडिशरी पर आती है। लेकिन देश के कोर्ट्स में भी जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा अलग नहीं है। 8 मार्च को एक बहुत ही शॉकिंग केस देखने को मिला। कैलकाटा हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दी। High court judge joins the BJP party. Okay. Objective is to remove corrupt Bengal government. Okay. या और कुछ ही दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खुद एडमिट किया कि रेजिग्नेशन से पहले ही इन्होंने बीजेपी Why is it with the CAL? I approached BJP ex Calcutta High Court Judge Abhijit Chavda. Political plunge sparks question. 2 days prior to the press conference, Genghis has announced that he will be resigning from this post to join active politics. I was on leave for the past 7 days so that no education comes to me. I have not done any education in the last 7 days. Both sides approach each other. I approached the BJP and the BJP also approached me, he said at the press conference. Okay.
को अप्रोच किया था और एक रीसेंट इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्हें बड़ी मुश्किल होती है गांधी और गोडसे के बीच चुनने में। ऐसे जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टीज के कांटेक्ट में रहेंगे तो क्या हमारी जुडिशरी को आजाद कहा भी जा सकता है? आप ही बताइए। कोर्ट कचहरी के सिस्टम में अक्सर एक बात बार बार दोहराई जाती है, बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि बेल मिलना अधिकार है लोगों का, लेकिन आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जेल रूल बनता जा रहा है। लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से झिझक रहे हैं। एडवोकेट दुष्यंत दवे के अनुसार जजेस पर प्रेशर है, एक डर का माहौल है, जजेस को अपनी फैमिलीज की चिंता होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही में इतनी बुरी है तो मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा? अगर देश सही में डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा है तो मेरा मुंह बंद कैसे नहीं कराया गया अभी तक? अगर लोकतंत्र खत्म हो जाए तो ऐसी चीज चल ही नहीं सकती है यहाँ पे। द प्रिंट के शेखर गुप्ता ने भी यही आर्ग्यूमेंट उठाया था मेरे पिछले वीडियो के बाद। इन सब लोगों के लिए मेरा एक सवाल है, स्क्रीन पर इस वीडियो को देखो और मुझे बताओ कि ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है। अब कोई भी नॉर्मल इंसान कहेगा ऑब्वियसली भाई टूटी हुई गाड़ी है, लेकिन शेखर गुप्ता का लॉजिक अगर यहाँ इस्तेमाल किया जाए तो वो कहेंगे देखो गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, इसका मतलब गाड़ी सही सलामत है। कोई सेंस है इस बात का? मेरा मुंह बंद नहीं हुआ अभी तक, इसकी खुशी मना रहे हो, और उनका क्या जिनका मुंह बंद ऑलरेडी कराया जा चुका है? इस न्यूज हेडलाइन को देखिए, 6 लोगों को अरेस्ट किया गया और 100 से ज्यादा FIRs कराई गई सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ के। लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कभी नहीं कहा था कि देश ऑलरेडी 100% डिक्टेटरशिप बन गया। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं। ये डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ये एक स्पेक्ट्रम है, एक स्केल है बहुत बड़ा। अलग अलग तरीके हैं जो डेमोक्रेसी मेजर करने के, वो भी 0 to 10 के बीच में नंबर देते हैं। अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत अच्छी चल रही है देश में डेमोक्रेसी तो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद है वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रेजिम और आखिर में अथॉरिटेरियन रेजिम जो एक्चुअल डिक्टेटरशिप। लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि एक छोटा सा स्क्रैच या डेंट भी लग जाता है ना, चिल्लाने लग जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस गाड़ी की कि लोग हैरान है देखकर कि गाड़ी अभी भी चल कैसे पा रही है। अगर आप अपने आप को देशभक्त कहते हो और गाड़ी की ये हालत देखकर भी अपनी आवाज नहीं उठाते तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक भी हो? इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट। India has been one of the worst autocraticists, don't know this word, in the world in recent years, Sweden-based Varieties of Democracy Institute said. In the report released on Thursday, the country remained an elective autocracy at the end of 2023 after first being categorized as one in 2018. The institute said in a report titled Democracy Winning and Losing at the Ballot, the report said that the Narendra Modi-led government in India has used laws on sedation, defamation, and counterterrorism to silence critics. So Sweden is saying that it's an autocracy. Sweden is calling India a an electoral autocracy. इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सेडिशन, डिफेमेशन और काउंटर टेररिज्म जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया है अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए, और जल्द ही इस लिस्ट में एक और कानून भी ऐड हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए IT रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का YouTube चैनल है, Facebook अकाउंट है, Instagram हैंडल है, Hold on. YouTubers are on the edge. Content creators express concerns over the implication of new broadcasting service regulation bill. Currently, the Cable Television Networks Regulation Act of 1995 mainly covers DoorDash
and private news channels, critics have expressed concern that the new bill could encompass all YouTube channels over the top OTT platforms. I don't know what OTT platforms, and even social media platforms like WhatsApp. They believe that content such as voices, videos, memes, and comedy shows broadcast on YouTube could fall under purview of the proposed new legislation. But what does that necessarily mean? I'm sure he'll explain. WhatsApp चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में. Proposal of broadcast service has raised concerns among independent journalists who fear that it aims to suppress voices critical of government and government policies and decisions. आएंगे. हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं. ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा. Every broadcaster or broadcast network operator shall intimate to the central government and also publicize the names, credentials, and other details of members of the website in such form manner. Every broadcaster or broadcasting network operator shall broadcast only these programs which are duly certified by the CEC. Provides that the central government may prescribe the programs on which requirement of certification from CEC shall not apply. Provisions of the chapter shall applicable in case of cable broadcasting network operators, satellite broadcast network operators, and IPTV network operators to only such operators who provide platform services of the network. प्रूफ किए गए except for specific programs exempted by the government. इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले. The draft bill allows government officers to conduct unannounced inspection at the homes or offices of the YouTubers or content creators and seize the equipment without prior notice. Many clauses in the draft bill remain vague, leaving uncertainty about the scope of implication. The proposed Broadcasting Service Regulations Bill of 2023 has raised concerns among independent journalists who fear that it aims to suppress voices critical of the government policies and decisions. Wait. Is the bill actually going after, does it specify YouTube and social media? Because even then, even if you're uploading content to like YouTube, you don't necessarily need to be like a content creator. Like me, for example, although, again, I'm not Indian, so I don't, this doesn't really pertain to me. But I wouldn't say I'm a content creator. I'm just making fun videos and uploading fun videos because I enjoy talking to people about the fun videos. It doesn't make me a content creator. Interesting. Okay. सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले. तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है. और जब मेरी आवाज फाइनली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी तब क्या जवाब दोगे? तब क्या आर्ग्यूमेंट बचेगा? अरे कोई बोलने वाला ही नहीं बचा. इसका मतलब डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में. और इस गलत फहमी में मत रहना कि भाई मैं तो सरकार का सपोर्टर हूं, मोदी सपोर्टर हूं, मेरा कुछ नहीं जा रहा. अगर देश डिक्टेटरशिप बन भी जाए तो भी मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा. सोनम वांगचुक भी एक बारी सरकार को सपोर्ट करते थे जब आर्टिकल 370 हटाया गया था. मेरे ख्याल से ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है. उसकी हक थी वो उससे वापस मिला है. लेकिन जब उनके एरिया में कोई प्रॉब्लम आई और उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी, 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला. डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर सिर्फ अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है. उसे जनता की कोई फिक्र नहीं होती. बहुत से किसान भी सरकार के समर्थक थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा, तब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है. आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो. बढ़ती महंगाई के खिलाफ आपको आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी. अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का नाइंसाफ अगर आप सह रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अपना मुंह बंद करके चुप बैठे रहने के अलावा. बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर तो ये चीज हम ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं. अगस्त 2023 में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट पड़ी हैं. प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड ने फरवरी के इस साल में बताया कि दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही हैं. मार्च 2024 की ये रिपोर्ट फ्रंटलाइन की है. आईटी सेक्टर में भी हायरिंग डिक्लाइन देखने को मिल रहा है.
जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की नौकरियां एडवर्टाइज करनी पड़ी इजराइल में। एक ऐसा देश जो वॉर जोन बना बैठा है, हरियाणा के यूथ को वहां भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की। और महंगाई की तो क्या ही बात करनी, पेट्रोल का दाम 90 रुपए से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड प्राइस How food inflation in India has been deglobalized, what factors can drive prices now. Global food inflation based on the FAO index has been in negative territory since November 2022. It's been the opposite in India, with the official consumer food price index inflation remaining stubbornly sticky and elevated at 9.5 in December 2023 as against a minus 10.1 for the former. प्राइस इंडेक्स है, वो ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को माइनस 10.1% पर डालता है। यानी दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन food prices are decreasing across the world. Absolutely not true in the US. No. As a enjoyer of food, as you can clearly see, food prices have been increasing at a very, very steady rate here in the US. And the US is one of the biggest exporters of food in the world. Like we're the biggest, not the manufacturers technically, I mean, whatever. We're the biggest growers, we're the biggest manufacturers of food, one of the biggest manufacturers and growers of food in the world, and our food prices are increasing. So it's and then it's also increasing all over places like Africa and Europe thanks to the Ukrainian-Russian war, because Ukraine, all the grain and farmland that they had, which was very, very a big necessity for much of Africa and parts of Europe. They haven't been able to do that because of the war, so that's raising food prices as well. Anyways. इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की? 9.5% पर। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ी 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देने की? ये तभी हो सकता है जब इन लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू सिर्फ मोदी सरकार के बारे में क्यों बोल रहा है? बट वॉट अबाउट इंदिरा गांधीज डिक्टेटरशिप? वो भी तो डिक्टेटर थी, उनके डिक्टेटर वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करता? ये फिर से एक फालतू का आर्ग्यूमेंट। I don't know much about her. इसे एक रेड हेरिंग फैलेसी कहा जाता है। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। अगर होता तो मैं यही वीडियोस बना रहा होता। और अभी भी इनफैक्ट मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के ऊपर, बताया है कि कैसे वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा था। लेकिन कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। उस वक्त जो हुआ वो बहुत गलत था, और इस वक्त जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है। उस वक्त कुछ लोगों के बहादुर संघर्ष की वजह से डेमोक्रेसी को बचा लिया गया देश में, लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी है। स्टेप 1, अपनी आवाज उठाइए। एक एक आवाज से फर्क पड़ता है। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो इस वीडियो को 100 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, इंडिविजुअली, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। हमारा मिशन है इस खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाना, देश के हर एक वोटर तक पहुंचाना। स्टेप 2, वोट करना मत भूलिए। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा क्योंकि एक एक वोट से फर्क पड़ता है। चेक कीजिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब है वोटिंग। अगर आप देश के बाहर होंगे तो आ जाइए वोट करने, क्योंकि इस बार सब कुछ दांव पर है। इस लिंक पर जाइए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चेक करने के लिए कि आप वोटिंग के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में you should always be registered to vote. No matter who you're voting for, you should always register and vote. नहीं आता, इसका मतलब आप वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। वोटर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए इस लिंक पर जाइए, ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3, अपने आसपास लोगों तक बात पहुंचाइए। क्या आप जानते हैं देश में 30 से 35% एलिजिबल वोटर्स वोट डालने ही नहीं जाते?
अपने परिवार में लोगों को कन्विंस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मोहल्ले में लोगों को कन्विंस कीजिए। जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। ये मत सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं। जैसा कृष्ण गीता में कहते हैं, फल की चिंता मत करो, जो तुम्हारा कर्म है वो कर्म करो। इस वीडियो को देखने वाला अगर हर एक इंसान बस ये ठान ले कि अगले 20 दिन तक मैं रोज 5 लोगों को जाकर इसके बारे में बताऊंगा, उसी से ही काम बन जाएगा। हम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस YouTube चैनल से जुड़े हुए। एक इंसान को सिर्फ 100 लोगों को रीच आउट करना है और इस तरीके से हम देश के कोने कोने तक सारे 100 करोड़ एलिजिबल वोटर्स को रीच आउट कर सकते हैं। और स्टेप 4, ये सब करना है खुशी से, हंसते हुए और प्यार फैलाते हुए। जोर से हंसना ताकि आपकी हंसी तानाशाह के अहंकार को डुबा दे। प्यार का दरिया बहाना है जिससे नफरत और अविश्वास का सब कीचड़ हट जाए। तो इन 4 चीजों को याद रखना, अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। बस इतनी सी जरूरत है। हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। Okay. It was an interesting video. It was a very interesting video. You can definitely tell like he's politically biased, which everyone has the right to be politically biased, right? Especially when it's concerning your own country. What do I say about what's going on? I say that I would like some more information, but again, I'm not a supporter of either side because I'm not from the country, so. No, I'm not. not trying to say anything negative or positive about either side. Just know that. But yeah, it was an interesting video. It's very well edited. I will say that the video is in itself is a very, very well edited video. The newspaper clippings, they go by a little quickly. I like to sit and read a little bit more, and the dramatic music is a bit much, but he does have the music does lead credence to like his talking points, right? Like what he's saying. If he has like this dramatic flair to the music, then what he's saying comes off as more urgent or more dire. So. Interesting. I expect the comments to be interesting on this video too. Yeah, so we are going to go down and read the comments. We're going to read by new comments, or we're going to read by top comments first, and then we're going to go to the newest comments. The newest comments, of course, are going to be saucy. Anyways, top comments. Want to save Manipur and Ladakh and the Constitution. Stay awake and raise your voice. As a first-time voter, I will be with democracy. Love my India. Dhruv Baya, I have never seen such personality like you in my entire life. I want to become like you. Like you are true Deshibakt. I don't know what that means. Dear Dhruv, you are very younger, but very elder and mature. You are a true voice of country. God bless you. I feel your words will open eyes of many. Let's read this one. Sir, you are single-handedly shook the entire Godi media. We need you, sir, just like this. Let's translate this one. Heartfelt congratulations to all the true patriotic journalists like you. This program of yours is very commendable, Mr. Dhruv Rathee, sir. Being a citizen of this country, I again appeal to the people watching the video that our responsibility does not end by watching the video and commenting. It is a responsibility to make Dhruv Rathee's voice. Wait. I think there's just translation error. Dhruv's video reach as many people as possible so that the country can be saved, so that democracy can be saved. I hope all patriots will take up the responsibility not to the interests of anyone else, but being the interest in the country. And long live the revolution. Long live the revolution. Dhruv gets funding from foreigners for speaking against India and setting the narrative, while who will fund us for doing the work? If Modi comes again, this time it will be BJP. Modi will cross all fours India. We stand with democracy. Kick out dictatorships. Yeah, it was kicked out in whatever that is.
Free Rashawn. I'm not gonna read all that. There's 131 comments. That's a lot of comments. Sometimes on my videos, I go through and I read some of the people, talking back and forth. But like on this video, and I see 100 plus replies, I'm not even gonna. I shouldn't even open it. Let's scroll down a little bit more. Hats off to you, young man, for your courage and patriotism. God bless. Loved it. Happy to see that someone is brave enough. Your efforts are commendable now. Tana Shah is gone. Hearty salute to your journalism. You are a very courageous and very truthful person. Let's roll this one. Our country will remember your passion and spirit for centuries. Okay. Well, let's go and take a look at the new comments, which I imagine some of these are going to be a little saucy, a little, a little interesting. Brother, we are... Please, brother, make a video. Brother, we are Rahin Gaia. Please make a video. I don't know what that means. Manish Kasyap is also here now. See, he is doing Modi. Some of these translations don't really work, huh? Mind blowing. I like you. I am with you properly. Real honest. Forward this video to every 100 people. Hurry up, everyone. I'm not a big fan of forwarding videos because that just inflates viewer numbers. I'm not the biggest fan of that. Fake Andhra Modi. Oh my God, what is this? Brother, sir, this is a country of mad people looking at these things. That's why slave for 1,000 years. The effects of slavery has just ended a little. The country of slaves, India country. Still crazy people say only Modi will come. Slave Hindu. What? What? Dhruv Rathee is a coward man who was very afraid of Muslims, so don't say anything about Muslim terrorism. Most of the Hindus are brainwashed by Dhruv Rathee's videos. Most of the Hindus are brainwashed, but he wrote the same thing in a reply to himself. Too bad, too worst. Dhruv Rathee, Arvind Arora. I don't know who this Arvind Arora is. Advertisements. Okay, that didn't translate. Okay. One thing for Dhruv Rathee, the dog has gone mad. The dog has gone mad. What does that mean? The dog has gone mad. The dog has gone mad. Okay. Do you know the meaning of dictator? Do you know that neither India, Atta from Germany, nor the video of India Gate was made? PTA and PTA also do not work. Where did the thread of your blue t-shirt disappear? He is mentally sick. Let's scroll down a little bit and see. A lot of these are from like just today, a couple hours ago. That's wild. I mean, it is a very big video, I guess. More power to you. The opposition leader put up big curtains just to see the public. There is no need to rally. Very well. Or as many videos as you watch, one day you will definitely cry with your hands on your head. What? Let's see our country first. All right. Just gonna scroll down a little bit more. Let's go up to this one. What about the something about West Bengal? What about Sandeshkhali, West Bengal? It was proof fake. BJP leaders forced women to make false rape cases. He's smiling. I don't know what that means. I don't know what that is. Okay. All right. Modi should be okay. I'm gonna downvote that. I'm not even gonna say it. You should not. You should not wish the death of people like that. This is in Gujarati. If you are entitled to freedom, then you will have to remember Subhash Chandra Bose, who does not remember the goals of the Krati. These are things that I sometimes it's just like it's hard for me to understand. You know, it's hard for me to understand. Mr. Dhruv, its wonderful analysis of true hypocritical liar, vindictive, and selfish prime minister who has no vision or mission. Till date, I have seen any opposition political could brief so accurate about this person. Thanks a lot.
But this video didn't really talk about Modi. It just talked about potential bills and potential things the political party's doing. It's not necessarily about Modi, the prime minister. Okay. Superb, fantastic discussion. Wow, BJP, wow. Okay. Why don't you ever talk about what happened to the Kashmiri Pandits? Also tell me about Kerala sometime. You're saying to Narendra Modi that he is from Modi to us. That is why you're making this video. Okay. Boycott mode. All right. Some of the Google translation is just not working, but that is Dhruv Rathee's most popular video over on his channel. I should just subscribe so I can make sure that I see the latest videos. He doesn't just do political videos, because I mean, if you look here, he's got something about the moon landing. I guess he just goes into a detailed description about it. The Titanic. The Bermuda Triangle. Time travel. The miracles of the Andes. Why is he talking about like conspiracy stuff like this? The Bermuda Triangle and time travel. The greatest mystery of Flight 370. The Taj Mahal hidden truth. Are ghosts real? The science of ghosts, paranormal boots, and Ouija boards exposed. Why is he talking about ghosts? His stuff is like all over the place. Aliens? So it's dark reality of cola drinks. He's got a large variety of stuff. Interesting. Okay. Interesting. And then he's got a bunch of stuff that's anti-BJP. Hero or villain? The real story of Oppenheimer. Okay. Well, that is Dhruv Rathee. And now we have Nitish Rajput with his video of... oh, that's the wrong video. Reality of Khalistan. Punjab Khalistan Movement Explained. This is his most popular video. 9.5 million views. Looking at his channel, I mean, he doesn't seem to do a lot of like geopolitical stuff. A lot of stuff pertaining to India. It's an interesting little video. Why Iran hates the USA. They hate us even more now. They're blaming us for... they're blaming the USA for not supplying them with updated helicopter parts because their president died in the helicopter crash. It's interesting. Anyways, reality of Khalistan. I do know... I do know a little bit about this. I did watch a couple videos. I did read a little bit on it. The Khalistan movement pertaining to Canada. Anyways, so I'm sure that this will touch up on that fact, but I'm also pretty positive that it will. Yeah, it looks like it goes through the whole history of the Khalistan movement. So I am looking forward to that. Wow, he's got a lot of links to things. Oh, his camera and stuff. Oh, cool. Okay, well, let's get into it. और यही रीजन था कि आर्मी को किसी भी कॉस्ट पे इस ऑपरेशन को 1 से 2 दिन में खत्म करने का ही फैसला लेना पड़ा। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेंपल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है इंडिया के अंदर। सज्जन कुमार जिसको this coming up next segment is odd. It's going for a little too long, I think. ने जिम्मेदार बताया था उसको 1991 में पार्टी से टिकट दिया गया। अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा और इसी वजह से गोल्डन टेंपल को ज्यादा नुकसान हुआ। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा गुरुद्वारे जला दिए गए कि एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन।
Oh, disclaimer. The video intends to raise awareness about certain social issues that affect Indian society. The views, ideas, opinions, and statements expressed, made, and or questions are not meant to impute anything or hurt the sentiments of any person, religion, race, society, organization, etc. Any decision and or acts of the viewers and or any third party based on the content of this video shall be entirely at his, her, their own discretion and free will, and I, Nitish Rajput, shall not be responsible and or liable in any manner whatsoever for the same or the contents of the program and or any of the issues arising therefrom. As a citizen of India, this video is a humble attempt towards my social responsibility. I do not intend to defame anybody. I do not intend to hurt anybody's feelings or judge anyone. Our society faces many issues that we tend to ignore rather than confront. My only aim is to openly discuss these issues and spread awareness. I wonder if I should make a disclaimer like this. I kind of like it. I kind of dig it. I might do it. I don't know. Maybe. देखिए, जब भी पंजाब में इलेक्शंस हों, फार्मर प्रोटेस्ट हों, पंजाब में जब भी कोई मुद्दा उठता है, मीडिया के अंदर खालिस्तान का नाम क्यों आने लगता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो 1984 में हुआ था, लेकिन भिंडर वाले का जो रेफरेंस है वो आज भी क्यों दिया जाता है? और इससे पहले कि हम अभी जो अमृतपाल सिंह वाला इंसिडेंट हुआ वो डिस्कस करें, इससे पहले इसके पीछे रीजंस क्या हैं वो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में हमें स्टोरीज तो पता है, लेकिन एक्चुअल रीजन नहीं पता है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी सिंपल लग रही हैं उतनी है नहीं। अमृतपाल सिंह देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी थी। पंजाब की असली स्थिति क्या है? स्थिति तो गंभीर है। The story of Khalistan. देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1823 से। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये उस टाइम का पूरा सिख अंपायर है, और जिसको रूल करते थे महाराजा रंजीत सिंह। तो देखिए, जब महाराजा रंजीत सिंह सिख अंपायर रूल करते थे तो ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया था, कोई अटैक नहीं किया था, और जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई और सिख अंपायर थोड़ा वीक हुआ तो ब्रिटिशर्स ने अटैक करके सिख अंपायर के ऊपर कंट्रोल ले लिया। और ये जो हरियाणा वाला पार्ट है, ये ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर में जोड़ दिया। So wait. Okay, so the Sikh there was actually a Sikh country or empire prior. पहले जो हरियाणा था वो सिख अंपायर में For whatever reason I didn't think there was, but no, I kind of knew, maybe. नहीं था। और ये जो सारी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब अभी आपको आगे रेलेवेंट लगने लगेंगी। अब ब्रिटिशर्स ने सिख अंपायर पे कब्जा करके राजा रंजीत सिंह के जो बच्चे थे उनको पढ़ाई के बहाने ब्रिटेन में शिफ्ट करा दिया था, ताकि आगे चल के अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो सिख अंपायर को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से एक्चुअल में सिख अंपायर का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला था वो कोई बचा नहीं था। जो लोकल महंत थे वो गुरुद्वारे के प्रीस्ट बने और उन्होंने कंट्रोल लिया। ये जो चीज थी, महंतों ने जो गुरुद्वारे पे कंट्रोल लिया था, ये चीज सिख्स को पसंद नहीं आ रही थी। तो 1920 में सिख कम्युनिटी ने अकाली मूवमेंट शुरू किया और ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि ये गुरुद्वारा महंत नहीं चला सकते, और प्रेशर इतना बड़ा कि 175 मेंबर्स की कमेटी बनी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो आजकल आप न्यूज में सुनते हो SGPC, वो इसी वजह से बनी थी। SGPC ने गुरुद्वारों से महंत को हटाया और गुरुद्वारों को रेगुलेट किया, और आज की डेट में भी ये लोग रेगुलेट करते हैं। आज भी प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, इनके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, और SGPC जो है वो उस पर्टिकुलर टाइम से ही सिख कम्युनिटी का फ्रंट फेस बना। और जो अकाली दल है और SGPC, इन दोनों में काफी क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम से ही। सिख अंपायर उस टाइम से ही काफी इन्फ्लुएंशियल और वेल्थी अंपायर था। ब्रिटिश आर्मी ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सिख ये मानते थे कि जब ब्रिटिशर्स ये जो कब्जा किया ये टेम्परेरी है, ये यहाँ से जब हटेंगे तो इनको इनका सिख अंपायर जो है वो वापस मिल जाएगा। लेकिन जो बिलीव था कि सिख अंपायर वापस मिलेगा ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इसको पहला झटका लगता है 1929 में, जब मोतीलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट शुरू किया, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट देश बनेगा जहां पे वोटिंग होगी और डेमोक्रेसी फॉलो होगी। देखिए, सिख कम्युनिटी इस इंप्रेशन में थी कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी तो हमारा सिख अंपायर हमें वापस मिल जाएगा। आप पुराने स्कल्पचर भी देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राज करेगा खालसा। तो ये जो पूर्ण स्वराज की बात थी, इसको सुन के सिख कम्युनिटी उतनी खुश नहीं थी। और जब 1946 यानी कि आजादी से लगभग 1 साल पहले जब ब्रिटिशर्स के जाने की बात होने लगी, तो सिख लीडर्स ने यह बात उठाई कि अंग्रेजों ने धोखा करके सिखों से पंजाब छीना था, और जब वो जा रहे हैं तो अंग्रेजों को पंजाब उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। अंग्रेजों ने कहा कि पहले क्या था वो मैटर नहीं करेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि नंबर्स क्या है, यानी कि पॉपुलेशन में किसका कितना हिस्सा है।
All the Khalistan thing, again, goes back to issues that essentially the British started. Okay. All right. I know it's like a meme. It's like a bad trope to say, oh yeah, it's the British's fault. It's them dang, that dang British Empire, the dang colonial British Empire. But I mean, it's hard to refute. It's really hard to refute. 1941 में पंजाब के अंदर एक सेंसस हुआ था जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी 53% थी, हिंदू 30% थे और सिख सिर्फ 15% के आसपास थे। और सिख कम्युनिटी को अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन का वो सिर्फ 1% हिस्सा था। तो यहाँ पे भी सिख डिसएडवांटेज पे थे और इन सारी चीजों की वजह से जो सिख कम्युनिटी थी वो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गई थी, क्योंकि उनको पता था कि नंबर्स की बात आएगी तो सिख हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। और आगे चल के सिख कम्युनिटी ने सिचुएशन के हिसाब से यूनाइटेड इंडिया का सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है यूनाइटेड इंडिया के साथ मिलकर रहने में। और यहाँ पे वो इस इंप्रेशन में थे कि उनको एक अलग स्टेट मिलेगा। अब यहाँ पे होता यह है कि मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा थे, तो अंग्रेजों को जाने के जब टाइम आ रहा था तो मुस्लिम्स ने पार्टीशन की बात कर दी। और पार्टीशन की बात से सिख कम्युनिटी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि पंजाब के अंदर भी मुस्लिम्स नंबर्स में ज्यादा हैं, तो अगर पार्टीशन होगा तो पंजाब का भी पार्टीशन होगा। इसलिए सिख कम्युनिटी ने कहा कि हमें यूनाइटेड इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो हमें भी सिखिस्तान चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान मिल जाएगा, हिंदूज को हिंदुस्तान मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने उसी पर्टिकुलर टाइम पे एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने सिखिस्तान की मांग की। लेकिन ये सिखिस्तान की मांग इसलिए थी कि अगर पार्टीशन करोगे, वरना इंडिया के साथ रहने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसी टाइम यानी कि 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने सिखों को रीअश्योर किया और कहा कि पंजाब के बहादुर सिख एक स्पेशल कंसिडरेशन को एंटाइटल्ड हैं। मैं इसको गलत नहीं देखता कि इंडिया के नॉर्थ में एक इलाका हो जहां पे सिख आजादी से जी सके। इस स्टेटमेंट को लेके अलग अलग थॉट्स हैं कि नेहरू जी ने सिख को अलग स्टेट जो कि सिख अंपायर जितना होगा वो देने का वादा किया और फिर धोखा किया। अब देखिए, इन सारी बातों के बाद भी बंटवारा होता है और इस बंटवारे में पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है, दूसरा हिस्सा इंडिया में ही रहता है। I still find it super ridiculous that it got split into Pakistan and India. That I don't know. I don't know. To me, it felt like it would have been better as a single country, but what do I know, right? By the way, I'm just putting these glasses on. I don't have like prescription glasses. They're just reading glasses. Between this video and the last video that I reacted to, there's a lot of reading. So I just wanted to make sure I wasn't missing anything. पंजाब में जो सिख कम्युनिटी रहती थी वो पूरे पंजाब में छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो बंटवारा कैसे भी होता, इससे सिख कम्युनिटी डिवाइड हो ही रही थी और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा था। लेकिन सिख कम्युनिटी डिवाइड होना नहीं चाहती थी। लेकिन पार्टीशन होता है और जो हिस्सा पाकिस्तान में जाता है वो पंजाब का 62% हिस्सा था और 55% पॉपुलेशन थी। और इस प्रोसेस में सिख कम्युनिटी की 150 से भी ज्यादा हिस्टोरिकल श्राइन्स, उनके रिचेस्ट लैंड और उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में ही रह गई थी। जो सिख पाकिस्तान में रह गए थे वो पार्टीशन के टाइम पे अपना घर, लैंड और प्रॉपर्टी छोड़कर इंडिया में आ गए। जो इंडिया में आना नहीं भी चाहते थे उनको पार्टीशन के टाइम पे हुए वायलेंस की वजह से आना पड़ा। इसलिए पार्टीशन के टाइम पे जो नुकसान हुआ था वो सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी का हुआ था। लेकिन सिख कम्युनिटी ने बहुत ही कम टाइम में फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था। और पाकिस्तान से जब सिख आए थे तो पहले तो सिख माइनॉरिटी में थे, अब वो पंजाब में मेजॉरिटी में आ गए थे, जिससे सिख कम्युनिटी का एक अलग सिख स्टेट होने का जो सपना था वो फिर से पूरा होता हुआ दिख रहा था। हालांकि ये सपना आसानी से पूरा नहीं हुआ। पार्टीशन के बाद भी कुछ चीजों को लेकर सिख खुश नहीं थे। खुशवंत सिंह की किताब आ हिस्ट्री ऑफ द सिख में उन्होंने लिखा है कि रोड ट्रांसपोर्ट, जिसपे एक तरह से सिख कम्युनिटी जो थी उनकी मोनोपोली थी, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। साथ में कलकत्ता में भी बस और टैक्सी सर्विसेज पे सिख का कंट्रोल था। तो वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले बंगाली रिफ्यूजी थे उनको प्रेफरेंस मिलने लगी। और सिख कम्युनिटी में एक कल्चर है देश की आर्मी को सर्व करने का, तो आर्म फोर्सेज में भी भर्ती के लिए जो पहले सिख कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती थी उसमें भी चेंजेस हुए। हालांकि ये चेंजेस हर स्टेट के लिए हुए, लेकिन इसको लेके भी सिख कम्युनिटी नाराज थी और अपना एक अलग स्टेट चाहती थी। The Punjabi, what was it, Suba movement? कम्युनिटी को प्रेफरेंस मिलती थी, उसमें भी चेंजेस हुए। हालांकि ये चेंजेस हर स्टेट के लिए हुए, लेकिन इसको लेके भी सिख कम्युनिटी नाराज थी और अपना एक अलग स्टेट चाहती थी। The Punjabi Suba movement. Oh. Suba. What does Suba mean? I know the spelling is different up here, Sooba, compared to the spelling down here, Suba. What does Suba mean?
गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए सिख मेजोरिटी वाले इलाकों को मिला के एक स्टेट भी दिया, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पेप्सू भी कहते थे इसको। लेकिन इसमें कहा जाता है कि अकाली दल की बढ़ती हुई पावर को देख के कांग्रेस ने इसको हटा दिया। अब इसके बाद 1956 आता है और इंडियन गवर्नमेंट लेके आती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें यह था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड किया जाएगा। कई सारे सूबों में इंडिया डिवाइडेड था तो उसको डिवाइड किया गया। क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो धर्म या फिर जाति के आधार पर स्टेट नहीं बन सकते थे, वो बनाना सही भी नहीं रहता, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाए गए। तो इसमें तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिल गया, मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिल गया। तो सिख कम्युनिटी का कहना था कि हरियाणा को छोड़ के पूरे पंजाब की जो भाषा है वो पंजाबी है और ज्यादातर लिटरेचर भी गुरुमुखी स्क्रिप्ट में है। तो आप हरियाणा को हिंदी I've not heard of the Gumaruki scripts before. स्पीकिंग स्टेट में मिला दो और हमें पंजाबी स्टेट दे दो और पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो पंजाब की। लेकिन सरकार ने ये जो डिमांड थी ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी। अब यहाँ से धीरे धीरे चीजें खराब होना शुरू होती हैं। खालिस्तान अभी भी पिक्चर में नहीं आया, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इन सारी वजह से अकाली दल के लीडर मास्टर तारा सिंह ने कहा कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और ये अब हम नहीं सहेंगे। पंजाब में इन सारी चीजों को लेकर सिख और हिंदू कम्युनिटी में छोटे लेवल पे राइट्स भी हुए। मास्टर तारा सिंह ने कहा कि सिख रिलीजन तभी बचेगा जब सिख प्रांत होगा और यहीं से उन्होंने पंजाबी सूबा मूवमेंट स्टार्ट किया। ये जो मूवमेंट था ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने पंजाबी सूबा जो स्लोगन्स थे उसको बोलने Police action only strengthened the agitation. Around 8,000 volunteers were arrested in the first week of July. Around 12,000 volunteers were arrested in agitation to lift ban on Punjabi Suba slogan. तक में बैन लगा दिया था। 12,000 के करीब अकाली जो थे वो अरेस्ट हो गए थे। 1955 में पहली बार पुलिस गोल्डन टेम्पल में घुसती है। 1984 में जो घुसी थी वो दूसरी बार था, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 1960 से 1965 तक बहुत सारे मूवमेंट हुए जिसमें मास्टर तारा सिंह अमरन अनशन पे रहे, अकालीज को अरेस्ट किया गया, नाउ और नेवर मूवमेंट और भी बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन जब 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, इसमें सिख कम्युनिटी ने भारत सरकार को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। सारे प्रोटेस्ट रोक के भारत सरकार के साथ खड़े हो गए। The demand for a separate Haryana Prant, which was gaining fast momentum, also helped in the advocates of the Punjabi Suba. The significant and patriotic role of the Sikhs for the defense of the nation during the Indo-Pakistan War also made the reprisal of the Punjab problem imperative, thus came into being the Punjab Suba on November 1st, 1966. इस वॉर में भी सिख सोल्जर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और लोगों को सिख कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंस थी उसका रियलाइजेशन हुआ और 1966 में सिख कम्युनिटी की बात मान ली गई और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। पंजाब को 3 स्टेट में बांटा गया, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। लेकिन इसमें चंडीगढ़ के ऊपर फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। उस टाइम चंडीगढ़ में 55% लोग हिंदी स्पीकिंग थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और ये कहा कि इसको दोनों स्टेट शेयर करेंगी। इसको लेकर सिख कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यही रीजन था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर भी चंडीगढ़ के बारे में बात की गई है, वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। अब देखिए ये सारी बातें तो चल रही थी, लेकिन इन सब चीजों के बीच में पंजाब एक अलग स्टेट बन चुका था और इसके बाद पहली बार इलेक्शन होते हैं पंजाब में। अकाली दल इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन अपने 5 साल पूरे The party first tasted electoral success in the provincial election of 1937 when it won 10 seats. Provincial election of 1946, the party won 22 seats and joined the coalition. Government headed by the Unionist Party along with the Indian National Congress. 1950 launched the Punjabi Suba movement, demanding a state with the majority of Punjabi-speaking people. At the reorganization of the Punjab. In 1966, the first government formed was by Alakal Gurman Singh. In 1967, the early governments did not last long because of internal conflicts. नहीं कर पाती, इसके बाद फिर से जीतती है। In 1970, now patriarch of the party was sworn in as a chief minister for the first time. Within a year, president's rule was imposed in the state. Therefore, he remained the chief minister from 77 to 80, 97 to 2002, 2007 to 2012, 2012 to 2017. लेकिन फिर कुछ दिन में ही सरकार गिर जाती है। The contending strategies of the Congress Party. 1997 तक एक भी बार ये लोग अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे। पंजाब की जनता हर बार इनको जितवा रही थी, लेकिन ये अपनी टर्म पूरी नहीं कर पा रहे थे और इसका ब्लेम लगा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस या तो मिनिस्ट्री में चेंज करवा देती है या फिर मिनिस्टर्स को इन्फ्लुएंस करके सरकार गिरवा देती है ताकि कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस है वो पंजाब में स्ट्रांग रहे। एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे लक्ष्मण सिंह गिल अकाली दल से जीते, इनको अकाली दल ने एजुकेशन मिनिस्टर तक बना दिया। लेकिन Is this? Yeah, it's like the text is like intentionally blurred. Weird. इन्होंने बगावत weird. करके Okay, it's very weird.
कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 13 एमएलए के साथ सरकार गिरा दी। तो इन सब वजह से कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगते रहे। अब इसमें अकाली दल के लिए दिक्कत ये थी कि चंडीगढ़ का मुद्दा हो या फिर पंजाब की रिवर्स के पानी का बात हो, फौज में कोटे की बात हो, सारे मुद्दों पे पंजाब के लोग बहुत ही प्रेशर बना रहे थे। और इधर अकाली दल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद की सरकार तो चला नहीं पा रहे थे, दूसरी तरफ पूरे देश में ये बोला जा रहा था कि जो अकाली दल है सरकार चलाने लायक नहीं है। ऊपर से सबसे बड़ा झटका इनको तब लगा जब ये 1972 में कांग्रेस से इलेक्शन भी हार गए और कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम ज्ञानी जैल सिंह बने और आगे चल के इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। I wanted to read that. Is it weird that I want to read these? I want to read these. The turning point in this career came when, in 1972, he was elected as the Chief Minister of Punjab from Congress. In 1980, after being elected in the 7th Lok Sabha, was appointed as the Cabinet Minister of the Prime Minister Indira Gandhi in the Ministry of Home Affairs. On July 25th, 1982, he was unanimously chosen as the president, a post he served for one full term till 1987. Anandpur Sahib Resolution. अब इन सारी सिचुएशन को देख के अकाली दल ने 1973 में अपने आप को रीथिंक। Okay, yeah, I want to read this. The working committee of this constituted a 12-member subcommittee on the December 11th, 1972 to formulate comprehensive policy and programs. The subcommittee comprised all these people. The committee, after serious deliberations at several meetings, submitted a comprehensive report, which was adopted by the working committee through a unanimous resolution of Shri Anandpur Sahib on October 17, 1973. The Journal House of I'm so bad with names. Akali Dal endorsed the resolution of Amritsar on August 28, 1977. It was endorsed by the open session, All India. Okay. Contested 1977 election in Parliament and the State Assembly and the election manifesto based on the... Okay. किया और 12 लोगों की कमेटी बना के मल्टीपल मीटिंग्स की। इस मीटिंग में पंजाब के जो इशू थे शुरू से लेके आखिरी तक, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में वापस लाना, Federal administrated city of Chandigarh should be transferred to Punjab, Punjabi to have second language status in the neighboring states of Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Delhi. 1985, then Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and Punjabi Akali leader Singh signed the... Okay. पंजाब का पानी पंजाब को ही मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का दखल जो है वो पंजाब में बहुत ही कम होना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेके एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। इसका फर्स्ट ड्राफ्ट सरदार कपूर सिंह ने बनाया था इंग्लिश में और संत फतेह सिंह को वर्बली समझाया था, जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, और संत फतेह सिंह ने उसको वर्बली सुन के He wasn't fluent in English? Okay, he approved it by listening verbally. His draft was in English. He explained its purpose and contents. Then head of the... okay. Who knew no language except Punjabi nodded his approval. Oh. That's not good. Okay. Interesting. Not his head in approval. The draft was based on the assumption that the Sikhs, being a chosen people, were predestined to rule. Master Tara Singh had held somewhat the same view when he said the Sikhs could either be rulers or rebels. प्रूव कर दिया। लेकिन 1973 में ये कुछ ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, ना लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया था। लेकिन अगस्त 1977 में ज्ञानी अजमेर सिंह, जो कि सेक्रेटरी थे अकाली दल के, इन्होंने एक नया वर्जन रिलीज किया इसका। उस टाइम ही लोगों में फेमस हुआ। ये ओरिजिनल रेजोल्यूशन से थोड़ा अलग था, अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हो इसका। और ये जो आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन था, इसके वर्जन को लेके बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी उस टाइम पे, और आज भी इसको लेके कंट्रोवर्सी होती है। असल में अकाली दल के अंदर भी कई ग्रुप्स थे। कोई नेता अगर पीछे रह जाता था या उसको कम इंपॉर्टेंस मिलती थी तो वो एक एक्सट्रीम वर्जन बना के इस रेजोल्यूशन को प्रमोट करता था लोगों में, और कम टाइम में पॉपुलर होने का ये एक श्योर शॉट फॉर्मूला था। खालिस्तानियों ने भी ये कहा कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग की गई है, अलग स्टेट की नहीं। देखिए, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन एक वेपन की तरह बन गया था जिसको लोग अपने हिसाब से यूज कर रहे थे। जब कंट्रोवर्सी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो संत हरचंद सिंह लौंगेवाल,
जो अकाली दल के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर को अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की कॉपी भेजी और कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो ऑथेंटिक वर्जन है वो ये है और कोई भी इस रेजोल्यूशन का गलत मतलब ना निकाले। उन्होंने कहा कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन में अलग देश की मांग नहीं की गई है और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। वैसे भी अगर आप सर्च करोगे तो अकाली दल ने ऑफिशियली कभी भी नहीं कहा कि उनको अलग देश चाहिए। देखिए, सिख कम्युनिटी अपने रिलीजन को लेकर काफी सेंसिटिव है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी ब्रिटिशर्स सिख कम्युनिटी को नहीं रोक पाए थे टर्बन पहनने से, बाद में चल के उनको मानना पड़ा था, जबकि हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। यही रीजन है कि पंजाब के अंदर रिलीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना हर पार्टी ने अपने एजेंडा में रखा है। जो पार्टी कमजोर होने लगती है वो रिलीजन लेके आती है। कांग्रेस भी जब पीछे होने लगी थी अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन के बाद, तो कांग्रेस की तरफ से ज्ञानी जैल सिंह, जो 1972 से 1977 तक पंजाब के सीएम बने, उनको भी ये समझ में आ गया था कि अकालीज अब पॉलिटिक्स करने के लिए रिलीजन का यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ये दिखाने की कोशिश की कि भले ही मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन मैं सिख धर्म के लिए अकाली से ज्यादा डेडिकेटेड हूं। उन्होंने सिख गुरुज के जो जन्म दिवस होते थे उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया और इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने महाराजा रंजीत सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो भी बहुत धूमधाम से मनानी शुरू करी। देखिए, अनंतपुर रेजोल्यूशन पंजाब में बहुत ही पॉपुलर होने लगा था, जिससे अकाली दल स्ट्रांग हुआ और आगे चल के अकालीज ने कांग्रेस को भी इलेक्शन में हराया। अब इससे डील करने के लिए कांग्रेस को एक ऐसा फेस चाहिए था जो अकाली से ज्यादा रिलीजियस हो, और यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसकी वजह से पंजाब की पॉलिटिक्स 360 डिग्री चेंज हो जाती है। अब देखिए, पंजाब के अंदर कई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीजन और एजुकेशन को लेके काम कराती हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है दमदमी तस्काल, और क्योंकि दमदमी तस्काल पंजाब के तहसील मूंगा के भिंडर गांव में थी, इसलिए वहां के रहने वाले लोगों को भिंडर वाले कहा जाता है। और उस टाइम पे जब दमदमी तस्काल के लीडर करतार सिंह भिंडर वाले की डेथ हुई तो उसके बाद जरनैल सिंह को दमदमी तस्काल का लीडर बनाया गया और लोग इनको संत जरनैल सिंह भिंडर वाले के नाम से बुलाते थे। भिंडर वाले ने लीडर बनते ही गांव-गांव में जाकर नशे छुड़ाने की मुहिम चलाई और लोगों से अपील की कि वो अपने He claimed that Sikhs were slaves in independent India, discriminated against by the Hindus. Bhindranwale wanted the Sikhs to purify themselves and return to the fundamentals of their faith. He spoke scathingly of the corrupt and effets. I've never... Effets? I don't know this word. Hindu, but mocked even more the modernized Sikh. He who had so far forgotten himself as to cut his hair and consume tobacco and alcohol. बाल ना कटवाएं और सिख धर्म को फॉलो करें। भिंडरवाल बहुत ही तेजी से लोगों में फेमस होने लगा और लोग आके उसके पास अपनी प्रॉब्लम और डिस्प्यूट सॉल्व कराते थे। और ये सब जब चल रहा था तो कांग्रेस के ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह ने संजय गांधी को भिंडरवाले के बारे में बताया कि भिंडरवाले एक ऐसा आदमी है जो पंजाब में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और अगर इसको हम फ्रंट फेस बनाते हैं तो अकाली दल के वोट कटेंगे इससे। और फिर आगे चल के कांग्रेस ने भिंडरवाले को अकाली दल के खिलाफ SGPC के इलेक्शन में खड़ा कर दिया और भिंडरवाले को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा था। अब इसमें होने ये लगा था कि भिंडरवाले को रिलीजियस बातों की वजह से लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा था और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने के बाद भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी और तेज कर दी और भिंडरवाले की किसी भी इंसिडेंट पे गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन 13 अप्रैल 1978 को एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे भिंडरवाले मेन स्ट्रीम लीडर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब देखिए, जो पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू। An audio book, okay. The audio book's an hour and 46 long. ब्लू स्टार। ये वीडियो बनाने से पहले इस ऑडियो बुक को मैंने सुना था, इसमें काफी डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। 82 मिनट्स की इस ऑडियो बुक को आप कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा काम करते हुए या ट्रैवल करते हुए सुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुक्कू FM पर हजारों तरह की ऑडियो बुक्स अवेलेबल। It's the advertisement time. Okay. एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, हॉरर, बायोग्राफीज जैसी कई कैटेगरीज हैं जहां आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑडियो बुक सुन सकते हो। कुक्कू FM इंडिया का नंबर 1 ऑडियो बुक लिसनिंग प्लेटफॉर्म है जहां कोर्सेज, स्टोरीज और ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप मेरा कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ भी ले सकते हैं। तो डाउनलोड करिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, सिख और निरंकारी सिख के बीच में एक वैचारिक मतभेद है। सिखों में टोटल 10 गुरु हैं, जिसमें से सिख का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी गुरु हैं और उसके बाद उन्होंने किसी को भी गुरु नहीं माना। और क्योंकि सारे 10 गुरु जो थे उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है तो उन्हीं को सिखों ने अपना गुरु माना। वहीं निरंकारी ने दोबारा से अपने लीडर को गुरु मानना शुरू कर दिया और इसको लेकर सिख और निरंकारी सिख में कन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। और 13 अप्रैल 1978 को कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इस दिन निरंकारी सिख जो थे उन्होंने एक इवेंट रखा जिसमें सारे निरंकारी सिख इकट्ठा होने थे, लेकिन भिंडर वाले ने कहा कि वो ये मीटिंग नहीं होने देंगे। जिस दिन ये मीटिंग होती है उस दिन दोनों ग्रुप
First hit the headlines by unleashing violence on... Okay, so Brindlewali 2 first hit the headlines by unleashing violence on the Nirankaris. Again, I'm terrible with names. I shouldn't be laughing because this is a serious topic. In a section clash in 1979, 17 people died. This was avenged by the murder of the worshipped by the followers almost as a guru inside his fortified headquarters. The killing was clearly masterminded by Brindlewali, and that catapults him into a hero in much of rural Punjab, where Sikhs had been brought up to believe that Nirankaris were a bunch of despicable heretics. Wow. ग्रुप में लड़ाई हो जाती है और 17 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन इसके बाद भी भिंडरवाले की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस इंसिडेंट से भिंडरवाले की हिम्मत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और ईयर 1980 में निरंकारी सिख के हेड जो थे बाबा गुरुबचन सिंह और उनके बॉडी One of the bullets pierced his chest and another hit his liveard. Again, another word I've never seen before. Bodyguard. Pratap Singh, who tried to protect him. 2 of his devotees were injured. Driver Kishan Paul, wife Rajmat Kulwant Kaur, grandson Nav Narim. Okay. Another devotee who were also in the car escaped unhurt. The Baba tottered and fell on a carpet. He was immediately taken to the nearby Tirithram Shan hospital where he was declared dead. The murders were carried out with an uncanny precision that recalled Frederick Firth's The Day of the Jackal, which by the strange coincidence is showing in the capital. This is the best planned murder I have come across in my 22-year police career. It has been executed like a commando operation, says Pratam Singh Bindar, Delhi's police commissioner. गार्ड की दिल्ली में हत्या कर दी जाती है और नाम भिंडरवाले के लोगों का आता है, लेकिन उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं होता है। इसके 1 साल बाद 1981 में पूरे देश के अंदर सेंसस स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, सेंसस में आपकी मातृभाषा पूछी जाती है और इसमें यह होता है कि जैसे पंजाब में ज्यादा लोग अगर पंजाबी को अपनी मातृभाषा बताएंगे तो पंजाबी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस मिलेगी और अगर ज्यादा लोग हिंदी बोलेंगे तो हिंदी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इस वजह से भिंडरवाले ने पंजाब के लोगों से कहा कि सब लोग अपनी मातृभाषा पंजाबी बताएंगे। इसको लेके हिंदूज डर रहे थे, लेकिन पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर था उसके एडिटर लाला जगत नारायण, इन्होंने ये कहा कि हिंदू लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आपसे जब पूछा जाए तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी ही बताएं। और इस चीज को वो रोज आर्टिकल में पब्लिश करते थे, लेकिन इस वजह से इनको गोली मार दी जाती है। अब इस इंसिडेंट को लेके गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर बनता है कि अब तो भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ेगा वरना हिंदू कम्युनिटी बुरा मान जाएगी। शुरू में तो गवर्नमेंट नहीं करती है, लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है और इम्पैक्ट पंजाब के बाहर से भी पड़ने लगता है तो गवर्नमेंट को अरेस्ट करना पड़ता है और यहां से कांग्रेस और भिंडरवाले में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और भिंडरवाले कांग्रेस के हाथ से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट अरेस्ट करती है पूरे पंजाब के अंदर वायलेंस होने शुरू हो जाते हैं, 17 लोगों की जानें चली जाती हैं। ये वायलेंस इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था पंजाब के अंदर कि भिंडरवाले को जेल से छोड़ना पड़ा शांति बनाने के लिए। लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा था भिंडरवाले को कि अकालीस को भी भिंडरवाले के साथ खड़ा होना पड़ा। अकालियों को लगने लगा कि सिख धर्म की बातें तो हम करते थे, लेकिन भिंडरवाले हमसे भी आगे निकल जा रहा है, इसलिए उन्होंने भिंडरवाले के साथ हाथ मिला लिया और यहां से कांग्रेस का दाव उल्टा पड़ जाता है। और 1982 में भिंडरवाले और अकाली दल ने मिलकर एक धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जिसका मेन गोल था कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन जो है इसको इंप्लीमेंट कराना है। इसके लिए इन्होंने रैलीज भी निकाली और कई बार रैलीज आउट ऑफ कंट्रोल भी हुई, तो कांग्रेस ने कई जगह पे फायरिंग भी करवाई। अब 1982 में दिल्ली में होने थे एशियन गेम, जिसकी जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई थी। इसको लेकर सरकार चाहती थी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इधर धर्म युद्ध मोर्चा, इनको पता था कि इस पर्टिकुलर इवेंट में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल कवरेज मिलेगी, तो धर्म युद्ध मोर्चा ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अब दिल्ली में ये गेम्स आराम से हो जाएं, इसलिए गवर्नमेंट ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो भी दिल्ली की तरफ से सिख जाते थे उनकी तलाशी लेना शुरू कर दी। बसेस में रोक के स्पेशली सिख और उनकी फैमिली की चेकिंग होती थी। इनफैक्ट कई सिख आर्मी पर्सन भी थे, उनको भी डिसरिस्पेक्ट किया गया, उनकी भी चेकिंग की गई। इसको लेकर सिख कम्युनिटी में काफी गुस्सा था कि हमारे ही देश में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये जो लोगों में गुस्सा था, इस पे अकाली ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन भिंडरवाले ने इस सिचुएशन को समझ के इसका बदला लेना स्टार्ट किया और इस टाइम पे भिंडरवाले अकाली से भी बड़ा नाम बन गया था और इसी वजह से भिंडरवाले को अकाली के भी कुछ ग्रुप्स थे वो पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, यहां से भिंडरवाले ने अपनी एक्टिविटी काफी तेज कर दी थी। 22 जुलाई 1982 को पंजाब के सीएम दरबारा सिंह पे जानलेवा हमला हुआ। अगस्त 1982 को एक इंडियन प्लेन को हाईजैक किया गया
जिसमें 126 पैसेंजर थे और हाईजैकर्स उस प्लेन को उड़ा के पाकिस्तान ले गए। बाद में पाकिस्तान ने प्लेन उतारने से मना कर दिया और प्लेन फिर वापस अमृतसर में लाया गया और उसके बाद फिर हाईजैकर्स ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद फिर से 20 अगस्त को एक प्लेन हाईजैक किया गया और हाईजैकर्स उसको लाहौर ले गए। कहीं बैंक रॉबरीज हो रही थी तो कहीं पे सरकार के हथियार लूटे जा रहे थे, बड़े पुलिस ऑफिसर्स को टारगेट किया जा रहा था, उनकी किलिंग भी होने लगी थी। अक्टूबर 1983 में अमृतसर से दिल्ली जा रही एक बस को हाईजैक कर लिया गया, जिसमें से हिंदू पैसेंजर्स को उतार के उनको गोली Some heavy stuff. Sikh terrorists massacred 34 Hindus on 2 buses in Haryana state Tuesday night, the day after Sikh gunmen killed 38 Hindu passengers on a bus in a neighboring... Oh my god. The modus operandi of the killings is the same as the one who we had inside Punjab. मार दी गई। अब यहाँ से पंजाब में सिचुएशन काफी खराब हो जाती है और पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट Punjab crisis takes dramatic turn. Darba Singh government dismissed president's rule imposed. The crisis in Punjab took a dramatic turn last fortnight with the imposition of the president's rule and dismissal of the Darba Singh government. The extremist killings continued, and on the surface, it appeared that nothing much had changed. What the government's actions and the reactions to due to emphasis was that more than any of the other times since the crisis erupted, the time for settlement was at hand. रूल लगा दिया जाता है। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरवाले ने अपने काम करने की लोकेशन को गोल्डन टेम्पल के अंदर अकाल तख्त पे शिफ्ट कर दिया ताकि वो सेफ रहे और भिंडरवाले को बहुत ही ज्यादा यकीन था कि किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि गोल्डन टेम्पल में घुसे। ये यहाँ से एंट्रेंस होती है और ये दरबार साहिब है और यहीं पे है अकाल तख्त। इसमें ही भिंडरवाले ने बैठना शुरू किया था। भिंडरवाले ने काफी हथियार जमा कर लिए थे और उसकी प्लानिंग इसलिए भी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उसके सपोर्ट में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, जैसे रिटायर्ड मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जिन्होंने भिंडरवाले के फाइटर्स को ट्रेन करना शुरू किया। शाहबेग सिंह 1971 he was literally creating an army. Humiliation of being dismissed from the service just a day before his retirement is what pushed 1971 war hero to serve as the military advisor to Sikh terrorists, according to the family members of the former officer. हीरो थे, जहां पे उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया था और वो At the time he was dubbed a hero, but by the time he was found dead after the army action at the Golden Temple in 1984, well, spoilers. Heavy stuff, man. He was being called a terrorist. His younger brother, Brent Singh, has said his brother sent him a letter proudly claiming that he had been instrumental in creating the Mukti Bahani and he had extensively trained them in guerrilla warfare, so he couldn't attend his marriage, which was solemnized on March 10th, 1971. गोरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट थे। इनफैक्ट उनको उस वॉर में कंट्रीब्यूशन के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था, लेकिन रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको करप्शन के चार्जेस लगा के सस्पेंड कर दिया गया। Corruption charges. He was dismissed from service without a court-martial, denying him his full pension rights. Though he was acquitted of corruption charges in February 1984, he had made up his mind by then. By training the Mukti Bahani, had played one of the most decisive roles in the 1971 war. जिससे उनकी पेंशन रुक गई थी। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। बाद में उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में भी केस किया और वो जीत भी गए, लेकिन इसकी वजह से वो कन्विंस हो गए थे कि उनके साथ discrimination based on religion. Okay. Order of dismissal was served to him while he was attending one of his relatives, attending bog of one of his relatives in Uttar Pradesh, now Uttarakhand. Wait, what? At Bajpur in Uttar Pradesh, now Uttarakhand. Uttarakhand was part of Uttar Pradesh? Ooh, I didn't know that. That's a fun fact. I mean, it's a fun fact in a heavy topic video, but I did not know that. He felt so humiliated and disgraced by his own country that he decided to take revenge his insult and cause much more financial damage that the central government had caused him by way of depriving him of his retirement benefits. He said, adding that he told the same to his mother when she questioned why he was dismissed after doing so much for the nation. रिलीजियस के आधार पे भेदभाव हुआ है। इसके अलावा एक और रिटायर्ड मेजर जनरल जसवंत सिंह भुल्लर थे, वो भी भिंडरवाला के जो फाइटर थे उनको ट्रेन कर रहे थे।
So he trained the Khalistan अब देखिए यहाँ से fighters. गवर्नमेंट और भिंडर वाले आमने सामने आ गए थे, जिसमें लड़ाई होनी तय थी और गवर्नमेंट और भिंडर वाले दोनों अपनी अपनी तैयारी में लग गए थे। अकाल तख्त के अंदर हथियार वगैरह ट्रक से आने शुरू हो गए थे। इधर इंदिरा गांधी जी ने सिचुएशन को समझ के एक और ट्राई किया, जिसमें उन्होंने नरसिम्हा राव जी से एक प्रपोजल भिजवाया कि अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की हम बातें मान लेंगे, लेकिन कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। ये जो प्रपोजल था ये पहले अकाली दल के थ्रू भिंडर वाले के पास गया। इस प्रपोजल को अकाली दल वाले तो मान रहे थे, लेकिन भिंडर वाले ने इस प्रपोजल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इससे पता चलता है कि अकाली दल सिर्फ पावर में आने के लिए ये सब कर रहा है। प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट लड़ाई के लिए रेडी थी और आर्मी वाले सादे कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर जाने लगे थे, ताकि भिंडर वाले के फाइटर्स, उनकी एक्टिविटी, लोकेशन वगैरह इन सब का पता चल सके। आर्मी की तरफ से ये जो ऑपरेशन था, इसका जिम्मा मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को दिया गया था, एक क्लीन शेव सिख ऑफिसर को, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश की अलग अलग जगहों से टैंक्स, माउंटेन गन्स, डाइवर्स और पुलिस डॉग्स पंजाब में आ रहे थे। इससे लोगों को समझ में आने लगा था कि कुछ होने वाला है, लेकिन इसके बारे में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह और वो आर्मी के सुप्रीम कमांडर भी थे, उनको तक इस ऑपरेशन की डिटेल नहीं दी गई थी। 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया और फोन लाइन भी बंद कर दी गई थी। आर्मी ने टेक ओवर ले लिया था और सभी लोकल और फॉरेन न्यूज रिपोर्टर्स को होटल और हर जगह से उठा के एक स्टेट बस में भरा गया और अमृतसर से बाहर कर दिया गया। लेकिन एक रिपोर्टर थे जो एसोसिएटेड प्रेस में थे, जिनका नाम था ब्रह्मा शलिनी, ये उस टाइम पे पंजाब के अंदर ही रह गए थे। तो इन्होंने उस टाइम पे रिपोर्ट किया और वो रिपोर्ट टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज में भी पब्लिश हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि सिख को गोली मारी जा रही है और 1000 से भी ज्यादा सिख मिलिटेंट्स को मारा गया है, जबकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डेटा था वो 600 बोला गया था। और आगे चल के ब्रह्मा के ऊपर केस चला दिया गया मिस इन्फॉर्मेशन और he was sued for misinformation. Wow. रूल ब्रेक करने के लिए। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार की एक्चुअल फाइट हुई थी वो 3 से 6 जून तक चली थी और इसकी टाइमिंग को लेके भी बहुत सवाल उठे थे कि 3 जून जिस दिन गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था, उस दिन ज्यादा श्रद्धालु आते गोल्डन टेम्पल में, और ये जितने भी लोग आए थे उनको अंदर जाने के बाद भिंडर वाले ने रोक लिया था ताकि आर्मी अटैक ना कर पाए। आर्मी को लग रहा था कि भिंडर वाले को आसानी से हरा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो इंटेलिजेंस थी वो काफी गलत निकली। ये लोग बहुत ही भारी प्रिपरेशन के साथ आए थे। रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक बंदूकें, स्नाइपर, प्रॉपर एक ट्रेंड मिलिट्री की तरह वो लोग ऑपरेट कर रहे थे और इंडियन आर्मी को भारी नुकसान भी हुआ। 5 जून को गोल्डन टेम्पल के अंदर से सभी लोगों को सरेंडर करने को कहा गया। अब शुरू में तो ये प्लान था कि बाहर से कम्युनिकेशन कट कर दिया जाएगा तो ये लोग अपने आप सरेंडर कर देंगे। गोल्डन टेम्पल की बिजली काट दी गई, टेम्पल के अंदर जो टेलीफोन और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई थी उसको भी काट दिया गया। लेकिन इस बीच में खबरें आने लगती हैं कि पंजाब के जो पास के गांव हैं उन इलाकों से हजारों की तादाद में सिख अमृतसर की तरफ आ रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। और आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने जिस तरफ भी देखा उनको हजारों लोग शहर के बाहर नजर आ रहे थे और यही रीजन था कि आर्मी को किसी भी कॉस्ट पे इस ऑपरेशन को 1 से 2 दिन में खत्म करने का ही फैसला लेना पड़ा और इसी वजह से गोल्डन टेम्पल को ज्यादा नुकसान हुआ। आर्मी ने एंटी टैंक मंगवा के 3 तरफ से अटैक किया। अकाल तख्त पे भी अटैक किया गया और ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था जो आगे चल के बहुत ही भारी पड़ा। भिंडर वाले के लोग बाहर आए और आर्मी के बीच में बहुत फायरिंग चली। भिंडरवाल के लोग भी आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन सुबह 4:30 बजे तक आर्मी ने अकाल तख्त पे अपना कंट्रोल ले लिया था। ये ओरिजिनल आर्मी के प्लान की कॉपी है जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। अब भिंडरवाले और उसके फाइटर्स को तो मार दिया गया था, लेकिन गोल्डन टेम्पल की जब इमेजेस बाहर आई और लोगों को पता चला कि अकाल तख्त के ऊपर और दरबार साहिब पे भी गोलियां चली हैं, पूरी दुनिया के सिख भड़क गए थे। Crazy. I want to take a look at this, not this one, the prior one. फायरिंग चली, भिंडरवाल के लोग भी आखिरी दम तक लड़ते रहे, लेकिन सुबह Operation Blue Star, main objective of assault on Golden Temple to flush out separatists hold up inside the complex. It took special group and army commandos 2 days to clear the premise. All right, so I'm going to close that. June 5th, 10:30 p.m., commandos enter the Golden Temple from the northern entrance. June 5th, 11:30 p.m., commandos make their way down the pillared halls along the perimeter. And then I guess it would go to, right over here. June 6th, 12:30 a.m., commandos take heavy firing at Darshani, Durari, Akal, Takit, and nearby buildings. Commandos take heavy casualties. Gas canisters bounced off. An armored carrier sent in with troops is immobilized by an RPG. 3 tanks take position at the gates across from and start shelling it.
Commandos clear up the damaged and recover bodies of Brindwali and Brindwali. Okay. Crazy. Wow. 4:30 बजे तक आर्मी ने अकाल तक The aftermath. आर्मी के 8 कैंटोनमेंट में से 4000 सिख सोल्जर्स ने रिबेल किया, लेकिन गोल्डन टेम्पल की जब इमेजेस बाहर आई और लोगों को पता चला कि अकाल तख्त के ऊपर और दरबार साहिब पे भी गोलियां चली हैं, पूरी दुनिया के सिख भड़क गए थे। आर्मी के 8 कैंटोनमेंट में से 4000 सिख सोल्जर्स ने रिबेल कर दिया था, अपने ऑफिसर्स को मार दिया था और अमृतसर पहुंचने की कोशिश की। कई सिख एमपीज और एमएलए ने रिजाइन कर दिया था और माहौल काफी खराब हो गया था। भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले के समर्थन अभी भी थे। इसके बाद आर्मी ने इस ऑपरेशन का सेकंड राउंड शुरू किया। आर्मी ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन वुड रोज नाम दिया। आर्मी ने एक के बाद एक गांव को घेरना शुरू किया और सिर्फ सिख लोगों के वेपन्स के लिए तलाशी ली गई। इस बात से भी काफी लोग नाखुश थे। इसके साथ ही सरकार ने अकाली लीडरशिप को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। संत लौंगेवाल से लेके प्रकाश सिंह बादल तक सारे के सारे जेल में थे। लेकिन इससे दिक्कत यह हुई कि जो लीडरशिप वैक्यूम पैदा हुआ उसको मिलिटेंट ने हथिया लिया। 1 अक्टूबर 1984 को आर्मी गोल्डन टेम्पल से विड्रॉ कर लेती है, लेकिन तब तक बहुत बड़ा डैमेज हो चुका था। बहुत से लोग जो उस वक्त गोल्डन टेम्पल गए, उन्होंने टेम्पल को जब डैमेज देखा तो गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाई कि जिन लोगों ने ये किया है वो उनकी जान लेंगे या फिर उनकी जान लेने की कोशिश में मर जाएंगे। इस हिट लिस्ट में प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, इंदिरा गांधी, उनके बेटे और फैमिली, आर्मी ऑफिसर्स और भी कई लोग थे। इंदिरा गांधी जी ने जब गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था, Dude. Gosh, dang man, this is some heavy stuff. This is some super heavy stuff. तो काफी डिस्टर्ब थी। अब देखिए, जो भी सिख कौम को जानता है उसको पता था कि रिटेलिएशन तो जरूर होगा और भारी होगा। और इस ऑपरेशन के जो मेन कर्ता धर्ता थे, जिनके ऊपर खतरा था, उनको बुलेट प्रूफ वेस्ट, बॉडीगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। सबसे ज्यादा जो गार्डेड था वो इंदिरा गांधी जी का घर था। इंदिरा गांधी को उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनकी पर्सनल सिक्योरिटी में से सिख गार्ड को हटाने की भी सलाह दी थी, लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को लगा कि इससे मैसेज गलत जाएगा कि वो सिख कम्युनिटी के खिलाफ है। और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और दूसरे सतवंत सिंह ने 18 गोलियां मार दी। इंदिरा गांधी जी को सोनिया गांधी तुरंत एम्स लेकर गईं और दोपहर 2 बजे तक उनकी डेथ हो गई थी। अब इसकी वजह से हिंदू सिख टेंशन बहुत तेज बढ़ गई थी। 31 अक्टूबर की दोपहर तक एम्स के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी और वहां पे जो भी सिख दिख रहे थे उनको पीटा जा रहा था। यहां तक कि भारत के प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, वो भी जब एम्स की तरफ पहुंचे तो उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए। एम्स से ये भीड़ आसपास के इलाकों में पहुंचने लगती है और पुलिस ने उनको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। दिल्ली में कनॉट प्लेस में सिखों की दुकानों को लूटा जाने लगा। उसके बाद सिख के टैक्सी, ट्रक, स्कूटर और 3 व्हीलर्स ये सब जलाए जाने लगे। साथ में जो डीडी चैनल था वो लगातार विजुअल दिखा रहा था, जहां पे एक तरफ इंदिरा गांधी जी की बॉडी थी और बगल में राजीव गांधी जी थे जो दुख में बैठे थे और पीछे से नारे लग रहे थे कि खून का बदला खून। इसके बाद जैसे टाइम बढ़ा था, दिल्ली के अंदर सिख को भीड़ ने टारगेट करके मारना शुरू किया। हजारों सिखों को मारा गया। दिल्ली में 100 से भी ज्यादा Government states approximately 2,800 Sikhs were killed in Delhi. In Delhi alone, 3,350 nationwide. While independent sources estimate the nationwide death toll to be approximately 8,000 to 17,000. Wow. Wow. गुरुद्वारे जला दिए गए, औरतों के साथ क्राइम हुए, लूटपाट हुई और पुलिस की तरफ से एक्शन नहीं हो रहे थे। बाद में इन क्राइम्स के लिए अरेस्ट किए गए 1809 लोगों को सरकार ने छोड़ दिया और इनकी इंक्वायरी करने से मना कर दिया, ये आर्ग्यूमेंट देके कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इससे चीजें और खराब होंगी। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी, PUCL, इन्होंने नवंबर 1984 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम था हु आर द गिल्टी। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो कत्लेआम हो रहा है इसमें दोषी कौन है, उनके नाम बताए। इसमें राजीव गांधी सरकार के मंत्री HKL भगत, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और धर्म कुमार शास्त्री थे। साथ में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी थे। 13 पुलिस ऑफिसर्स और 198 पुलिसमैन भी शामिल थे। सज्जन कुमार, जिसको CBI ने जिम्मेदार बताया था, उसको 1991 में पार्टी से टिकट दिया गया और वो भारी वोट से जीता भी। ये आप एक बार पॉज करके आप पढ़ लेना, CBI और पुलिस की रिपोर्ट। All right. Prior to 2005, the Delhi police had investigated Kumar's role in the riots. The investigation was then given to the Central Bureau of Investigation in 2005 by recommendation from Justice JT.
Nanvati Commission. In the subsequent investigation, the CBI concluded that there was a conspiracy of terrifying proportion between Kumar and the police during the riots, and that the Delhi police had systematically removed Kumar's name from all eyewitness testimony reports. In 2010, as a result of the CBI investigation, Kumar was tried for murder, dacoity? I don't know that word either. Mischief to cause damage to property, promoting anonymity between different communities, criminal conspiracy, and other provisions of the Indian Penal Code. Eyewitness testifies how Sajan Kumar had colluded with the police and incited mobs to kill Sikhs. In 2012, the CBI prosecutor told a Delhi court that riots targeting the Sikhs had the patronage of Kumar. CBI alleged that he organized anti-Sikh riots, and he along with 5 others being tried at the court for killing 6 Sikh people. बोर्ड में जो आया था जगदीश टाइटलर, जिसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने दंगे करवाए, उसको भी टिकट दिया गया और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी काम संभाला उन्होंने। 1984 के दंगों के बाद इलेक्शन हुए और राजीव गांधी भारी वोटों से जीत के पीएम बने। उन्होंने पीएम बनते ही कहा कि पंजाब की प्रॉब्लम उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है, तो उन्होंने पहले जितने भी अकाली लीडर जो जेल में थे उनको निकाला और अकाली लीडर्स के साथ मिलकर 24 जुलाई 1985 को राजीव लॉन्गेवाल अकॉर्ड साइन किया। इसमें एक मेन पॉइंट था कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब देखिए, भिंडरवाले की तो डेथ हो गई थी, लेकिन भिंडरवाले एक सोच थी और ये सोच अभी भी थी कुछ लोगों में। भिंडरवाले के समर्थक अभी भी पंजाब में थे, जिनको ये राजीव गांधी के साथ साइन हुआ अकॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं आया और बाद में संत लॉन्गेवाल की उन्होंने हत्या कर दी। राजीव गांधी जी ने सिचुएशन को तुरंत संभालने के लिए अकॉर्ड साइन तो कर लिया था और अकालियों को वादा भी कर दिया था, लेकिन हरियाणा के सीएम भजन लाल ने राजीव गांधी को कहा कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को चला गया तो हरियाणा के हिंदू उनको वोट नहीं देंगे और आपके हाथ से हरियाणा भी चला जाएगा। ये बात राजीव गांधी को समझ में आई और बाद में वो इस अकॉर्ड से बेसिकली पीछे हट गए, जिसके लिए उनको आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। देखिए, भिंडरवाल के समर्थक अभी भी बचे थे और टाइम टू टाइम वो खालिस्तान की बातें करते रहते थे। सरकार उनको धीरे धीरे एलिमिनेट कर रही थी। एक बार फिर से गोल्डन टेंपल में भिंडरवाल के समर्थक बैठ गए थे और उसके बाद दोबारा से ऑपरेशन ब्लैक थंडर करना पड़ा। इस बार पॉलिटिशियंस ने आर्मी की जगह पुलिस से ही डील करवाया और टेंपल को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 बार हुआ, एक 1986 में और दूसरा 1988 में, और इस तरीके से भिंडरवाल के सपोर्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। धीरे धीरे करके सिख कम्युनिटी को प्लीज किया गया। जैसे कि जब चंद्रशेखर जी पीएम बने थे तो वो जो भी पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते थे उसमें वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह का नारा लगा के उसके बाद मीटिंग शुरू करते थे। मनमोहन सिंह जी सिख थे, उनको पीएम बनाया गया। ये कहा जाता है कि इसमें भी सिख को खुश करने का एक मोटिव था। इसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन ठीक होने लगती है। अकालीज और कांग्रेस ने मिलकर पंजाब से एक्सट्रीमिस्ट को बाहर किया, कुछ को मार दिया गया, कुछ विदेश चले गए, वहां जाके खालिस्तान की डिमांड करने लगे, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। बीच बीच में खालिस्तान की आवाजें निकलती थी, लेकिन बहुत ही कम लोग थे और वो इतने पावरफुल भी नहीं थे। अब देखिए, चीजें 2015 तक तो नॉर्मल रही। इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से लोग फिर से भड़कते हैं और खालिस्तान की बातें फिर से तेजी पकड़ लेती है। जब 1 जून 2015 को फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के बुर्ज जवाहर सिंह वाले गांव के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब जी की चोरी हो गई। फिर इसके कुछ दिन बाद ही 25 सितंबर को इसी विलेज के आसपास कुछ पोस्टर मिले जिसमें सिख को टारगेट किया था। इसी गांव में गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस के साथ बेअदबी हुई। गुरु ग्रंथ साहिब जी की डिसरिस्पेक्ट को करना ही बेअदबी कहा जाता है। इस इशू की वजह से दोबारा से सिख रिलीजन पे अटैक का मुद्दा पंजाब की पॉलिटिक्स में आने लगा था। ऐसा एक नैरेटिव बन गया था कि सिख धर्म पर दोबारा से अटैक हो रहे हैं, साथ में अकालीज और वीक हो गए थे। तो रिलीजियस लोग अलग अलग पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देखने लगे थे। इंडिया के बाहर भी खालिस्तान का रेफरेंडम चलने लगा था और नरेंद्र मोदी जी जब पावर में आए थे तो इनको लेके ये भी कहा जाता है कि ये स्टेट पावर स्ट्रांग नहीं रहने देते हैं, तो पंजाब के स्टेट राइट कहां से करने देंगे, या रिवर का इशू होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन सब के बीच में दीप सिंधु, जो एक एक्टर भी रहे, इन्होंने टाइम टू टाइम बोला और फार्मर प्रोटेस्ट में भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी बातें बोली। दीप सिंधु ने एक वारिस पंजाब दे नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका ऑब्जेक्टिव था कि ये सेंटर से पंजाब के राइट्स दिलवाएगी और पंजाबी कल्चर को सेव करेगी। लेकिन पंजाब चुनाव से 5 दिन पहले ही 15 फरवरी 2022 को एक रोड एक्सीडेंट में दीप सिंधु की डेथ हो गई। वाह। और इसके बाद एंट्री होती है अमृतपाल सिंह की, जो कि दुबई से ही दीप सिंधु के टच में था, लेकिन ये लोग कभी मिले नहीं थे। दीप सिंधु की डेथ के बाद अमृतपाल सिंह को सितंबर 2022 में वारिस पंजाब डे का हेड अनाउंस कर दिया जाता है। अब इस पे दीप सिंधु की फैमिली ने कहा कि उसका दीप सिंधु से कोई लेना देना नहीं है और उसने जबरदस्ती वारिस पंजाब डे पे कब्जा कर लिया। लेकिन अमृतपाल के जो सपोर्टर थे, उनके जो करीबी थे, उनका कहना था कि दीप सिंधु के जो समर्थक हैं उन्होंने ही उसको वारिस पंजाब डे का हेड बनाया। अब 29 सितंबर 2022 को अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है इंडिया के अंदर।
भिंडरावाले के पुश्तैनी गांव रोडे जो कि मोंगा जिले में है, वहां पे एक दस्तरबंदी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें हजारों लोग आए और हर कोई शौक था क्योंकि बहुत भारी सपोर्ट मिला। क्योंकि इतना सपोर्ट के लिए नेता लोगों को ग्राउंड पे बहुत काम करना पड़ता है और कोई दुबई से आके कुछ ही महीने में इतना सपोर्ट ले ले तो हर कोई शौक था इस वजह से। और ये सेरेमनी हुई थी, इसमें मल्टीपल टाइम्स प्रो खालिस्तानी नारे भी लगे थे। अमृतपाल सिंह ने आते ही बताया कि भिंडरवाले उनके आदर्श हैं और भिंडरवाले की तरह ही ड्रग्स की बात की और बेअदबी को मुद्दा बनाना शुरू किया और सिखों को केश रखने को कहा, अपने धर्म को बढ़ाने की बात करी और कहा कि अब से जो भी बेअदबी करेगा उसको ना तो पुलिस को दिया जाएगा ना कोर्ट केस चलेगा, हम उसको सजा देंगे। सोशल मीडिया में भी अमृतपाल सिंह बहुत तेजी से फेमस हो रहा है और यंग जनरेशन का भारी सपोर्ट मिल रहा है। और जब इसी 24 फरवरी को उनके एक साथी तूफान सिंह को पुलिस ने किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया, तब अमृतपाल सिंह के साथ हजारों लोग निकल के आए जिसमें उनके हाथों में बंदूकें, तलवारें थीं और साथ में अमृतपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को अपने साथ रखा और अपने सर पे रख लिया ताकि पुलिस उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई ना कर पाए। पुलिस अगर उन पर कार्रवाई करेगी तो वो बेअदबी हो जाती। पुलिस को अमृतपाल सिंह के सामने झुकना पड़ा और पुलिस ने तूफान सिंह को छोड़ दिया और इसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए। अजनाला इंसिडेंट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब में बहुत ही पॉपुलर कर दिया है। ऐसे लोग जो एक नए पंथक पॉलिटिशियन की डिमांड कर रहे थे उनको अमृतपाल में अपना एक नेता दिखने लगा। कुछ लोगों को अमृतपाल सिंह में भिंडरवाले भी दिख रहा है। इस इंसिडेंट के बाद अमृतपाल सिंह को मीडिया में बहुत ही स्पेस मिल रहा है और अब खालिस्तान और अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन का जो इशू है वो धीरे धीरे तूल भी पकड़ रहा है। अमृतपाल का कहना है कि वो डेमोक्रेसी के थ्रू खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, लेकिन उन्होंने हिंसक तरीकों के इस्तेमाल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अब आगे ये चीज कितनी दूर तक जाएगी ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन मीडिया को नया भिंडरवाले मिल गया है। लास्ट में फिर से आपको याद दिला दूं कि कुक्कू एफएम की ऑडियो बुक ऑपरेशन ब्लू स्टार का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार जरूर सुनिएगा, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू। Whoa, that was loud. Holy heck, dude, that's some heavy stuff. Okay. See, I knew about the genocide against the Sikhs, but like I didn't know about the whole war operation, the battle operation prior. At least not in the detail. Okay, so this is actually a different perspective of the Khalistan movement from the other video that I watched on it. This is actually really interesting. Actually, truthfully interesting. So extremism pushed people to the point of doing bad things. People retaliated. A lot of people died. People started backing their party. More people died. It's tough, man. It's a heavy video. It's a very heavy video. It's a very, very heavy video. That's all I can really say on it. Holy heck. Okay. Well, it's time to read some comments now. I'm gonna subscribe before I forget. Yeah, let's go ahead and read some comments really quick. We'll read by top comments first, and then we'll do new comments afterwards. I'm Sikh. I know there was some incident brought us to think for the separation by the politicians, but we are a peaceful community. I'm from India first after Sikh. I'm from India first after Sikh. See, the first Sikh guru gave me my name. Tell me, brother, why don't you like Hindus? We feel proud of Sikh community. The guys are literally generous. Just visit their gurdwaras. You'll get the reason. Okay. I listened first non-Sikh person on internet explaining Punjab very well without mixing any agenda in the video. Thanks a lot, bro. I'm not a Sikh. I am not a Hindu or Muslim. I am Indian first. Big respect to the Sikh community. Salute to your stand, but your statement itself states that you are from a Hindu family. Only Hindus have heart to say that they are neither Hindu, Sikh, or Muslim. Why do you have to take the love of someone's heart only when someone's heart loves you? Only then will you find happiness in your heart. The whole world will be in trouble. Then you are a human being. Very good. Finally, someone unbiased spoke on Sikhs. Thank you, brother, for the clean facts. I will admit, this felt very unbiased. It felt like, okay, here's the facts. Here's what happened.
And he just simply explained it. Okay. As a Hindu, very proud to our Sikh community. I don't know what that says. Wow, being a non-Sikh boy, having immense knowledge of Sikh history. Wonderful, God bless you. I am Rajput, but I have a huge respect for Sikh community. Okay. Being an Indian, I always have a great respect for our Sikh brothers. May my Punjab live with laughter. God bless you. Please make more videos like this. We want to know more about the Sikh history and their sacrifice for the country. Keep doing good work. Those people who speak wrong about Khalistan can understand by watching your video. You have explained the issue 80 years and 37 minutes, and that too is in an amazing way. Thank you. Very nice, precise content. You missed 2 important points. Pakistan angle. Yeah, we didn't really get the Pakistan angle very much. Reference of Mark Tooley's book. Thank you, bro, for making right content. As a Sikh, I'm really thankful as the video is very close to reality. Okay. Good channel. Eye-opener. Wish you a massive success. Okay. All right. Let's take a look at some of the newer comments to come in and see what is not rated as a top comment. Sikhs are very brave. Congress's Day, Khalistan, Islamic terrorism. Congress's Day is Khalistan, Islamic terrorism. Islamic terrorism. That doesn't translate. I like that. But he's saying Brindwali Zindabad. I know Zindabad. Let's see Santa's pictures. That is a very bad translation, I think. Why did they go to the hospital when the operation was done? Like Dhruv Rathee, this journalist took the advice of BJP, and I'm not going to click on that link. I'm Punjabi Hindu, but I'm supportive Sikh. Okay. Yes, even today we don't like that era of partition. Yeah. Congress at the root of all things is not Sikhs' faults. Oh no. Blaming Congress for it, huh? Okay. Khalistan Zindabad. Anchor's too good. Good coverage. Let's go ahead and scroll down a little bit. Here we go. This had I'm reading all that. Let's see this one. Nehru did not act like this till the beginning. In Punjab, everyone speaks Punjabi at their own, so to you are saying that Brindwali said everyone to say Punjabi is their first language doesn't make sense. It's misinformation. A few more allegations are wrong. Wrong, and this person just simply says wrong information without any clarification. If you're gonna say wrong information, say what's wrong about the information. You should stop your bullshit. Seriously, who needs you? Oh man, okay. Fake news? Fake news. We're talking about fake news. Deep's accident did not happen. Brindwali supporters are still there. Okay. Alright. He misses many facts. What facts did he miss? No one allowed to attack an own country with our own army in holy place. I don't know what that says. Then why do you want Punjab to become some other country? You have done a lot for the country, but still its importance is important only because you read the app and use the time. Good information. Brother, in your time, the star of media has wrong Sikhs. Shame on you, bro. How is this wrong Sikhs? I don't... Okay. Well, maybe I just don't understand. That was Nitish Rajput, his most popular video. A nice and interesting one. Nice and interesting indeed. And now we have Abhi and Niyu. I believe it's Niyu. I'm pretty sure it's Niyu, but again, I don't really know names very well. And their most popular video is This is Destroying India.
Pan masala industry needs to stop. Spitting problem of India. It's a shorter video compared to the videos that we've been watching recently, which is perfectly fine. So let's go ahead and see what's up. But it looks like it's like, yes, it's like spitting tobacco, I think. Which, does India have a very large spitting tobacco problem? I don't know. I like the Goku poster right away. The Batman poster is okay. It's a shame that it's bigger than the Goku one. Just putting that out there. Anyways, without further ado, let's go ahead and get it started. कभी सोचा है कि 4 रुपए में बिकने वाला ये पान मसाला अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे महंगे एक्टर्स को कैसे अफोर्ड कर सकता है? पान मसाला, गुटखा, खैनी, उप्स, मेरा मतलब है ये केसर इलायची इंडस्ट्री कितने पैसे कमाती है? ये रंगीन प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री एग्जैक्टली कितनी बड़ी है मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इसका आंसर जानने के बाद आई वाज शॉक्ड। तो आइए जानते हैं हाउ बिग इज इंडियन स्पिटिंग। This is a gross image. This is a gross image. Well, I don't even know what this is, but it is a gross image, that's for sure. इंडस्ट्री वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहला सवाल, ये पान मसाला वाले लोग इतने बड़े स्टार्स को कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? फिल्म अवार्ड्स को स्पॉन्सरशिप पान मसाला कंपनीज देते हैं, बड़े न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पर बड़े बड़े एड्स छापते हैं, यहाँ तक अपने 30 सेकंड के एड के शूट के लिए फॉरेन लोकेशंस भी जाते हैं। ये सब करने के लिए पैसे तो लगते होंगे, और ये ब्रांड्स ये सारा खर्चा इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। See, in the US, I don't think it's legal to have tobacco ads anymore, actually. Like cigarettes and chew. I'm assuming pan masala is carcinogenic. I'm pretty sure this is like chewing tobacco, right? Because he's saying spitting, and spitting is like a chewing tobacco thing. I'm pretty positive this is like a chewing tobacco. It's weird that the celebrities are promoting it, though. क्योंकि भारत का पान मसाला मार्केट The pan masala market in India has reached the value of 41,821 crore in 2021. Looking forward, iMark Group expects to market the reach INR 53,081.5 crore. Keeping up with the mind the uncertainties of COVID-19. What is this? 3%? Okay, just a huge amount of money. Huge amount of money. 41,000 crores का. To put things in perspective, इंडिया का चॉकलेट मार्केट 16,000 करोड़ का. Oh my God, really? Is chocolate just not popular? हमारा बिस्किट मार्केट 37,000 करोड़ का। बड़े एक्टर्स एक एड के लिए 10 करोड़ चार्ज करते हैं, जो एक 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 0.02%। भारत पान मसाला एक्सपोर्ट करने में दुनिया में नंबर 1 है, और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्टर यूएई है। पूरी टोबैको इंडस्ट्री कुल मिलाकर Okay, it is tobacco. Pan masala. Pan masala. Now, is this like a specific type of tobacco, or is that just like the Indian word for like chewing tobacco? I don't know. 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करती है। अब आता है मेरा दूसरा सवाल, क्या लोगों को कैंसर बेचना लीगल है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दुनिया में 10 करोड़ लोग टोबैको रिलेटेड कैंसर की वजह से मरते हैं। Yeah, chewing tobacco is so bad. 21वीं सदी में 100 करोड़ होने वाला है। मूवी शुरू होने से पहले आपने वो मुकेश वाले एड्स तो देखे ही होंगे। कैंसर का इन सारे नशीले पदार्थों से रिलेशन है, ये समझने के लिए आपको कोई साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार थिएटर में जाकर मूवी देखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। कैसे? क्योंकि वो जीनियस है, मार्केटिंग में जीनियस। यू सी, अब भारत में टोबैको प्रमोट नहीं कर सकते। You can't promote tobacco in India. What? Then how are they promoting it? वो जीनियस है, मार्केटिंग में जीनियस। You see, अब You can't promote tobacco in India. भारत में टोबैको प्रमोट नहीं कर सकते। 2011 के बाद सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने तंबाकू के साथ पान मसाला बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनीज ने क्या किया? पान मसाला में से टोबैको हटा दिया। पान मसाला बेसिकली पान के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर। Okay, so it's not chewing tobacco. All states ban selling tobacco with pan masala. ने तंबाकू के साथ पान मसाला बेचना बैन कर दिया। तो इन कंपनीज ने क्या किया? पान मसाला में से टोबैको हटा दिया। पान मसाला बेसिकली पान के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है, इसीलिए केसर के नाम पर भी बिकता है और इसे एक फूड आइटम की तरह बेचा जाता है। इनफैक्ट
एक पान मसाला को वही ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है जो आपके पार्ले जी को रेगुलेट करती है। ओके, तो टोबैको नहीं है राइट, तो पान मसाला खाने से क्या फर्क पड़ता है? द सीक्रेट है, जब आप पान मसाला खरीदते हैं तो लोकल पान की टपरी वाला आपको एक और पैकेट देता है जिसमें असली माल होता है। और A spice mix? After mixing this mixture in the pan ये masala. माल पान मसाला में मिलाने के बाद आपको मुंह का कैंसर मिलता है। What? Literally, मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ ये पैकेट मांगा और उसके साथ साथ पान वाले ने मुझे ये पैकेट भी दे दिया मेरे पूछे बगैर। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने में पान मसाला कंपनीज माहिर है, क्योंकि टेक्निकली उनके प्रोडक्ट में टोबैको तो है ही नहीं, तो इस पैकेट पर कहीं भी वो Even something like this is like, well, so you're buying the pan masala and they're giving you a tobacco spice mixes, or are giving you a packet of spice mixes. It's clearly like tobacco, right? Yeah, that is some shady stuff. Okay. कैंसर वाली वार्निंग भी नहीं है। इसी मोरल के पीछे छुपकर बड़े बड़े स्टार्स इसे प्रमोट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑफ कोर्स 5-10 करोड़ मिल रहे हैं तो ना कौन बोलेगा। इस स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अल्कोहल के So wait. What did he say here? If you're getting 5 to 10 crores, 5-10 करोड़ मिल रहे हैं तो ना who कौन will say बोलेगा। no? I don't think I'll ever get any advertisements, but I for one would never take any shady advertisements. I wouldn't take any advertisements that I would be opposed to. Right? Like you see a lot of these people who take every single a lot of these YouTubers that just take every single advertisement that gets thrown at them, and they just show whatever they have to inside of the video. I'm not like that. I would be highly selective, but again, I'm probably never going to get any advertisements, so. इस स्टाइल ऑफ एडवर्टाइजिंग को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। अल्कोहल की एड बनाना बैंड है तो अल्कोहल कंपनी सेम नाम पर क्लब सोडा निकालते हैं ताकि ब्रांड की इमेज बने। कैसेट्स एंड सीडीज निकालते हैं ताकि ब्रांड का नाम याद रहे। पॉपुलर एड कैंपेन्स चलाते हैं जो आपको सालों साल याद रहे। एड में जो प्रोडक्ट ये लोग प्रमोट करते हैं वो आप कभी खरीदते नहीं, लेकिन हाँ जब आप वाइन शॉप में जाते हैं तो आपको ब्रांड का नाम याद रहता है। सिमिलरली पान मसाला ब्रांड सिल्वर कोटेड इलायची। That CGI is horrid. Oh my god. ब्रांड का नाम याद रहता है। सिमिलरली पान मसाला ब्रांड सिल्वर कोटेड इलायची बेचते हैं जिनका पैकेट उनके पान मसाला या खैनी के पैकेट से एकदम मैच करता है, लेकिन एड में उनका मेंशन नहीं होता। अब इलायची बेचना क्राइम थोड़ी है। इनफैक्ट मैंने एक ब्रांड की चाय की एड देखी जहां हीरोइन का ड्रेस भी खैनी के पैकेट जैसा दिखता है। इस सरोगेट एडवर्टाइजिंग ने किसी भी बड़े स्टार को छोड़ा नहीं है, फिर वो हिंदी का हो या साउथ का, नया हो या पुराना। वेट, तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? लोगों को पता है कि ये चीज उनके लिए बुरी है। लोगों को पता है कि स्टार्स एड्स में झूठ बोल रहे हैं। लोगों को पता है कि अगर उन्हें कैंसर हुआ तो वो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो बेवकूफ हैं तो है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब ये बेवकूफी उन लोगों की भी जान लेती है जो खुद पान मसाला खाते हैं। आज तक कोविड से भारत में 5 लाख के आसपास लोग मरे, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ 1 साल में 5 लाख लोगों की जान लेती है, और ये कहानी हर साल रिपीट होती है। इस बीमारी का नाम है टीबी, जिसके बारे में कोई कभी बात नहीं करता। पूरी दुनिया के 1/3 केसेस भारत से आते हैं। 1/3 of cases of tuberculosis come from India? Oh, I mean, I'm just assuming it's because of the bigger population, right? But still, that's a lot of cases. क्यों? क्योंकि टीबी कोविड की तरह ही ड्रॉपलेट से फैलता है। जब एक इन्फेक्टेड इंसान खांसता है, छींकता है या फिर रास्ते पर थूकता है, तब उनके इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स उनकी बॉडी से निकलकर हवा में जाते हैं। सवाल यह है क्या बाहर के लोग छींकते खांसते नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन वो थूकते नहीं। एक पान मसाला खाने वाला इंसान ऑन एवरेज 10 मिनट में 20 से 30 बार थूकता है। अगर वो रिक्शा चलाने वाला हो जो पूरे शहर में घूमता है और अगर उसके बॉडी में टीबी हो तो वो लिटरली spitting it, it is so gross. Oh, like chewing tobacco and spitting is just it's so gross. टीबी एक दिन में पूरे शहर में फैला सकता है, आपके घर ला सकता है, आपकी किसी भी गलती के बिना आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये पान मसाला इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। उसका एक रीजन था क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री को एक सवाल पूछना। अगर करोड़ों रुपए एड्स पर खर्च हो सकता है, अगर आपके एक एड में 1 से ज्यादा स्टार्स हो सकता है, तो आपके टोटल बजट में से एक छोटा सा हिस्सा
आप लोगों को थूकने से रोकने में क्यों नहीं खर्च करते? इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ सिर्फ थूक साफ करने में स्पेंड करती। बाय दैट लॉजिक ये खर्चा एक्चुअली किसे करना चाहिए? इस नुकसान की जिम्मेदारी लेता कौन? आपका प्रोडक्ट, आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, उसमें टोबैको हो या ना हो, मेरे देश को ऐसे 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 बर्बाद कर रहा है। थूकने वाले को शर्म नहीं है? क्या आपको शर्म है? क्या ये 41,000 करोड़ की इंडस्ट्री अपने टोटल टर्नओवर का 0.01% हिस्सा ये धब्बे साफ करने में खर्च कर सकती है? उनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जरूर है, लेकिन उससे पहले मैंने मेरे बिहेवियर में एक छोटा सा बदलाव लाया। मुंबई में किसी भी रिक्शा में बैठने से पहले मैं रिक्शा वाले को एक सवाल करता हूं, क्या आप रास्ते पर थूकने वाले हो? अगर वो हाँ कहता है या फिर उसके मुंह में मैं कुछ देखता हूँ तो फिर मैं उसकी रिक्शा में नहीं बैठता। जब मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मुझे लगा कि मैं रिक्शा में ही नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे कोई रिक्शा वाला मिलेगा ही नहीं। मैंने सोचा था कि सारे रिक्शा वाले थूकिया होते हैं, बट आई वॉज रॉन्ग। मुझे एक दो बार रिक्शा छोड़नी पड़ी, लेकिन इमीडिएटली मुझे नेक्स्ट रिक्शा मिल गई। इससे दो फायदे होते हैं। एक, मेरा पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो नशीले पदार्थ खाकर अपनी गाड़ी रास्ते पर नहीं उतारते। ऐसे लोगों को नहीं मिलता जो मेरे पैसे से ये चीजें खरीदने वाले हैं। पैसा अच्छे लोगों को मिलता है, अच्छे लोगों का फायदा होता है, प्लस मुझे टीबी होने का चांस कम होता है। और दूसरा, थूकिए लोगों को एक रिमाइंडर मिलता है कि मेरे जैसे पागल लोग हैं जो उन्हें सवाल पूछते। अगर उनके मन में थोड़ा सा गिल्ट होता है तो होने दो। आज प्रॉब्लम यही है कि जो लोग गलती कर रहे हैं उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पुलिस वाले भी तो थूकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग भुगत रहे हैं वो सच कहने से डरते हैं। क्यों? मेरा भारत महान। ये गाड़ी के पीछे लिखने वाले लोग वो गाड़ी रुकते ही उसी भारत पर थूकते हैं, यही सच। तो मेरा सवाल आपसे, क्या आप उन लोगों को पैसा देंगे जो आपके देश पर थूकते हैं? क्या आप उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे जो उनकी गंदगी साफ नहीं करते? क्या आप उन एक्टर्स की फिल्मों के लिए एक्साइट होंगे जिन्हें पता ही नहीं कि उनकी एक्शंस की वजह से भारत में कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां फैल रही है? अगर आपको इन सवालों में सेंस लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सवाल लोगों तक पहुंचने जरूरी। टैग योर फेवरेट एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड आस्क देम। क्योंकि पेंडेमिक की वजह से 2 साल लोगों को घर बैठना पड़ा। लगा था कि अब तो लोग सुधरेंगे, वही सेम गलतियां नहीं करेंगे जिन्होंने उनके पेट पर लात मारी थी। बट आई वाज रॉन्ग। आपके मुंह में कैंसर ठूसना है तो ठूसो, बस थूकना मना। ये मैसेज हर एक इंसान तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि एक के करने से क्या not the uplifting लेकिन music. एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता। Okay. The uplifting music is a bit extreme, huh? Oh, he's got more to say. Is it like an advertisement or something? Hold on. फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अब आपके एक छोटे से स्टेप से भारत से ब्लड कैंसर कम कर सकते हैं। कैसे? जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आपको आपके बच्चों के साथ एक फन एक्टिविटी स्टार्ट करनी है जो पूरे वर्ल्ड को बचा सकती है, तो इस वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। Interesting. All right. Well, definitely a slightly different video from what I was expecting to be the most popular video. But yeah, so it basically this pan masala. Oh god, that is just so gross. Spitting is so gross. I hate it. I'm so glad it's not super popular here in the US. Man, it is just gross. I don't know. All right, I don't even know why I'm staring at this. It was an interesting little video. I did not know this. It's an interesting little fact. They sell it, and then they give you a secret little mix to put in that actually has the tobacco in it. Interesting. All right, well, let's go ahead and read some comments then. First, we'll read the top comments, then we'll read the new comments. Thumbnail editor deserves a raise. Hi, everyone. Don't forget to ask... Oh, that's him. No words to express how happy it feels to see you, sir. Explaining and talking on different topics really support you. We Indians have a good thinking ability when it comes to finding loopholes, be it Vimal, Royal Stag, and Kamla Pasand, and all have been using this technique. We as citizens need to be responsible and not promote such ads. There are 100 reasons to love India, but there is 101 reasons also to love India. That we have great citizens like Abhi and Niyu in this great country that make me proud to be an Indian and everyone else too. Finally, someone raised the issue. As a doctor myself, I've lost count on the number of times I must have scolded or tried to explain about the risk of airborne infections to such thukias. I don't know this word.
Hats off, Abhi and Niyu. Another day, another great video. Keep working, keep going. Thank you so much for this video. Now I'm aware of this pan masala ads and how dangerous they are for our country. Great video. Thank you for putting huge work behind this video. Hats off for educating ignorant people. You really deserve Bharat's Ratna. I don't know what Ratna means. Being a 13-year-old girl, I have seen numerous people spitting on the roads, and I have always felt like stopping them, but I fear to get scolded, as people have a tendency to scold at the young ones when they point out your mistakes. Hopefully, people who spit realize the mistake after seeing this video. You know, people who spit will never come here, and as a girl, it is even scarier. I always stop people from spitting regardless of how they behave. I just tell them to get a life instead of making the pan shop their second home. Be a warrior. Same, but I don't scared because I know they are wrong. They will suffer. No, me, I can protect myself. I'm a 13-year-old girl, but I know how to protect myself from these types of things. As a 12-year-old boy, I agree. Why do you care? It's so weird seeing little kids talk on videos like this. Just kids talking in general is a little odd. On like kids commenting, but I'm used to it, right? It's all over the internet. All right, let's take a look at new comments. This is just a string of numbers, okay? Oh, there's clearly some like bots. Whatever this is, whatever's going on here, weird. It's here as well. Whoa, here's another one. What is this weird bot shenanigans? And another one from months ago. It goes back months. And another, and another, and another. Oh my God, what is this? SN? Is this, what? ID? SN? What is this? I don't understand. I don't understand. There was this, I know he asked like for people to tag people, but that doesn't tag anything. All right, I don't even know what about Pan until IPL. Yeah, I saw a few advertisements for it. The Indian Premier League for the cricket 2020, right? Big salute for this video. Thumbnail is epic. He sold in 5. Nice, thanks for the efforts to make such an important video. This is how alcohol is not bad for Indian environment. Alcohol is bad too. Alcohol is good, it earns less and does not cause dirt. Yeah, but alcohol harms the body a lot too. It harms the body and the soul, and the mind and the soul. I'm from the United States, and I thought it was really interesting how heavily tobacco is marketed in India, because my country banned most ways of advertising tobacco about 50 years ago. It can't be advertised on TV, radio, and billboards. While I am a smokeless tobacco user myself, he's a chewing tobacco guy, he spits, I agree with you that advertisements should stop because children shouldn't romanticize tobacco. And about the horde spitting problem, a method could be to carry an empty water bottle. Yeah, that's what they do here. They carry a bottle, like a Pepsi bottle or a Coke bottle or something, and then when they're done drinking it, they just keep spitting in it, so it like slowly fills up with their spit. It's so gross. I can't. That's what we do in the U.S. We use empty water bottles or something like and spit in and either pour it down. Pour down the drain later or reuse, just throw it away. Oh my God, I can't. Just the thought of it. Ugh. So gross, dude. Ugh, I'm done. We're done with this topic. We're done. Get it out of here, man. Get it out of here. Oh my God. Oh. And with that, everybody, we have reacted to the biggest videos from these 4 Indian YouTubers. It was an interesting experience. Very, very different videos between all of them. Genghis Khan, BJP dictatorship, information on the Khalistan movements, and a gross one about spitting.
Yeah, very interesting. It was a fun little time reacting to all these. I think I want to do it again. If you have any big Indian YouTube channels that you want me to react to, let me know down below, and I might do another big video like this where I just go through and react to the most popular videos from each of the channels. If you have any specific videos you want me to react to, of course, you can go ahead and put that down below. A lot of people that ask for a lot of different things, and I will say the playlist that I have for reactions is massive. It's like 80 videos long now. Actually, it might even be more. It might be closer to 100, if not over 100. So yeah, I have a lot of videos to get to still, and I suggest going and checking out some of these videos. I'll stay subscribed to all of them. I try to subscribe just for people to know. I try to subscribe to the channels that I react to, just so I can keep on top of what they're putting out, right? So I can know in the future if there's anything interesting that comes out, anything that catches my eye. So yeah, interesting time. Well, with that being said, thank you for watching, everybody. I hope you had a good one. Remember to like, subscribe, leave a comment, and yeah, I'll catch you later. Take care. Goodbye.